start? So just it start from your introduction level. Can I? Yes, yes, go ahead. You can ask coordinator. Who is coordinator? Yes, Yes, ma'am. गौरव सर. Yes, ma'am. Yes. सुरू करायचं का? Yes, ma'am. शिरसाट सर आहेत ना? Yes, yes, right. Okay, yeah. Thank you. Thank you, sir. Yeah, it's good afternoon to everyone. We are honored this session by the presence of the Honorable Resource Person, Professor M.D. Shirsat, sir. Sir is a senior professor at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University in Aurangabad. Some key highlights on Professor M.D. Shirsat, sir, that is, he has over 35 years of experience in teaching, research, and innovation. He has published over 282 research papers with 202 in high impact factor journals. His H index is 37 and I-10 index is 121 with over 5,000 citations. He has successfully supervised 26 PhD scholars and 5 postdoctoral fellows. He has received over rupees 17 crore in research grants from various funding agencies. He has established a Center for Advanced Sensor Technology at the university with state-of-the-art facilities. He played a key role in getting the university accredited with an A grade by the NAC. He has visited and collaborated with many universities around the world, including in the US, Australia, and Europe. And concluded that Professor Shirsat is an accomplished academic with a strong record of research, teaching, and administrative experience at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. Thank you, sir. It's over to you, sir. Thank you very much, madam. Before I start, I would like to understand the composition of audience, like the faculty members. Uh, are they from all the discipline, or they are from specific discipline? And then what is their background? Moreover, like I mean, are they from all of them are from Maharashtra, or is there anybody outside Maharashtra? Sir, outside of Maharashtra, Karnataka. How many? Sir, I am Gujarat. You are from Gujarat. Okay, so there are I am people from also Bihar. Maharashtra. Okay. तर बिहार बिहार तर मॅडम बिहारच्या मॅडम तुम्हाला मराठी समजेल का? थोड़ी बहुत सर, क्योंकि मैं यहाँ पे रही हूँ थोड़े दिन महाराष्ट्र में, तो थोड़ा बहुत समझती हूँ. ओके, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा. आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इन मराठी, इसीलिए दैट इज द रीजन आई वाज आस्किंग कि बिकॉज अगर सभी लोग महाराष्ट्र के हैं तो आई वुड हैव प्रेफर टू स्पीक इन मराठी एंड इंग्लिश because I always believe that bilingual presentation would be better. Only presentation in any one language is not going to be, it is going to be monotonous. तो इसीलिए मैं पूछ रहा था. So Karnataka participant, would you be comfortable in Hindi? Yes, sir. Yes, sir. Hindi, English is okay, sir. Okay. Yes, Hindi, English is okay, sir. Is there anybody from Tamil Nadu? No, sir. No, sir. Okay, because many people from Tamil Nadu, they will have problem of Hindi language as well. So anyway, nobody is there. So Hindi English would be okay, right? Okay, Sir. जी sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let me first share my screen. So are you able to see the screen? Yes. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. And it is moving as well. Yes, Screen is moving? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So at the outset, let me express my sincere gratitude to the director of the center, deputy director of the center, and coordinator of this program. And I would also like to thanks to begin with all participants. And I'm expecting your patient listening. I'm going to be with you for 2 back-to-back sessions. So 3 to 4:30, and with a gap of 15 minutes, I will again
uh, uh, start another session. So what I'm going to do is there would be two different section of my deliberation. In first part, I will be speaking on important facet of drafting of research proposal, and in second part, I will be telling you what kind of funding opportunities and research opportunities you will be having. One more input I would like to have from you. Are you, I mean, जितने भी रिसर्चर हैं, सभी सीनियर रिसर्चर है या मिडिल एज है या यंग रिसर्चर है, और आर यू लाइक इज अ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री डिफरेंट कैटेगरी? मैडम, मैडम आपने इंट्रोड्यूस किया ना, आप बताइए। Yes, sir. माइक माइक जरा कौन कंट्रोल कर रहा है सेशन प्लेटफॉर्म? ओके, तो जो मैडम ने इंट्रोड्यूस किया वो मैडम, हेलो। Sir, हाँ hello, sir. I'm हाँ, from बोलिए Shri मैडम। Muktanand College, Kapur. So हम्म, I'm still pursuing my PhD. So some young researchers are also there, and some हाउ of मेनी, them are having good. okay, how many total participants are here? 36, 36, 36, 36, 37. Okay. So out of 36, most of you are young researchers, young faculty members? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the beginning phase of your career, right? Yes, sir. ओके, ये इंफॉर्मेशन मैं Yes, इसीलिए sir. ले रहा हूँ बिकॉज इट विल हेल्प मी टू decide like what would be depth of my presentation, because if you are senior teacher, then I should not go in detail because you must be having many projects, but those who are in the beginning phase of their career, they need like all this information. Moreover, whenever we Sir, are most talking of us are in the beginning of our career. okay, most of you are from in the beginning phase. Okay. Sorry. Uh-huh. Okay. So because uh, as far as the drafting of research project proposal is concerned, it's not only research project proposal, but even drafting of research manuscript is concerned. It is basically an art. And this art, because you need experience to earn this skill of drafting research proposal. ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप जब बिगिनिंग फेज में होते हैं हमारे टीचिंग करियर के, तो वी ऑलवेज हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन ड्राफ्टिंग। ओवर द टाइम हमारे स्किल सेट जो है फाइन ट्यून होते हैं, एंड देन वी विल बी एबल टू ड्राफ्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइक एक्सेलेंट मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन शुरुआत में वी हैड अ लॉट ऑफ टफ टाइम। तो ये जो ड्राफ्टिंग के जो अलग अलग फैसेट्स है वो जानना बहुत जरूरी है। सो दैट इज व्हाई आई विल बी टेलिंग यू मोर डिटेल्स अबाउट दैट इन फर्स्ट लेक्चर, and in the second deliberation after break, I will be telling you what kind of funding and research opportunity you will be having, and then I will be summarizing. Whenever we are talking about research project proposal, we are having many speculations about the funding of research project proposal. हम कहीं पर भी, मतलब whether it is affiliated college or constituent college or university department, जब हम हमारे स्टाफ रूम में बैठते हैं तो we always have gossiping about the funding of research project proposal. क्या क्या हम गॉसिपिंग करते हैं, वो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। नंबर वन, यू ऑलवेज गोइंग टू, मतलब हमारे दिमाग में ये सवाल रहेगा कि वेदर पीएचडी इज गोइंग टू बी मैंडेटरी फॉर सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल। जैसे कि यहाँ पर अभी एक मैडम ने कहा कि हमारा अभी पीएचडी हुआ नहीं है, यू आर स्टिल परस्यूइंग योर पीएचडी। काफी टीचर्स ऐसे होंगे जो पीएचडी अभी तक हुए नहीं होंगे, बट दे मस्ट हैव रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी। तो क्या ये मैंडेटरी होगा सभी एजेंसीज के लिए, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वेदर द पब्लिश रिसर्च पेपर्स आर गोइंग टू बी प्री रिक्विजिट। एंड देन ये भी बहुत सारे रूमर्स हम सुनते आ रहे हैं कि ओनली दोज टीचर्स आर गोइंग टू गेट फंडिंग हु हैव linkages with those funding agencies. And the last speculation और reality भी कुछ हद तक मैं कहूँगा
कि हम बहुत बार कहते हैं कि हमारे जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर वी डोंट हैव एनकरेजिंग एनवायरनमेंट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी डोंट सबमिट प्रपोजल। क्योंकि जो पैसा जब हम लाएंगे किसी फंडिंग एजेंसी से, हमें पूरा फ्रीडम नहीं दिया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं प्रोजेक्ट के, वो हम फुलफिल समहाउ कर नहीं सकते, एंड देयरफॉर वी हैड ए टफ टाइम। So I'm going to spend some time on this slide. So to begin with, let me tell you, PhD is not going to be mandatory for submission of research project proposal, truly speaking. However, there are many schemes of different funding agencies. They are going to make it very clear right in the beginning, because कुछ schemes ऐसे हैं कि वहां पर PhD mandatory है, और there are many schemes in which PhD is not mandatory. तो सभी प्रोजेक्ट स्कीम के लिए PhD मैंडेटरी नहीं होता है, बट देर आर मेनी स्कीम्स इन विच द PhD इज गोइंग टू बी मैंडेटरी। सो आपको देखना पड़ेगा कि विच स्कीम यू आर लुकिंग फॉर द एप्लीकेशन। हावेवर, जो क्योंकि whenever we are asking money from funding agency, the funding agency is going to see like what kind of credential you have, what kind of credibility you have. तो क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है, तो क्रेडिबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू लुक इन टर्म्स ऑफ योर प्रायर पब्लिकेशंस। तो जिस टॉपिक में आप प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, वहां पर उस टॉपिक में आपके कितने पेपर पब्लिश है, रिसर्च पेपर पब्लिश है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। अदरवाइज मतलब आई वुड से इट इज गोइंग टू बी प्री रिक्विजिट, क्योंकि आपके पास अगर पब्लिश पेपर नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो मोस्ट लाइकली योर प्रपोजल इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर। सबसे पहले ये होगा कि वेदर यू हैव पब्लिश पेपर, एंड सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि वट एवर पब्लिश पेपर यू हैव, वेदर दोज पेपर्स आर फ्रॉम गुड जर्नल्स, रेप्यूटेड जर्नल। तो इसलिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि रेप्यूटेड जर्नल के मायने क्या है, क्या पैरामीटर्स है, that also I am going to discuss. So it is quite obvious that you should have a prior published papers in good journal if you really want to ensure that you are अगर आपका प्रोजेक्ट फंड अगर इंश्योर आप करना चाहते हो तो। देन नेक्स्ट स्पेकुलेशन इज, जो हम बहुत बार कहते हैं कि यार ये XYZ बंदा है, ये तो वहां पर इसके कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ही इज गेटिंग लॉट ऑफ फंडिंग फ्रॉम फंडिंग एजेंसी। ये बिल्कुल सही नहीं है, दिस इज वेरी रॉन्ग मानना है। मैं ये कहूंगा कि whenever you are submitting proposal, प्रपोजल सबमिट करने से पहले मैं तो, बिकॉज आई बिलीव ऑन लिंकेजेस, नॉट अंडर टेबल लिंकेजेस, बट लाइक linkages in good frame of mind, in positive way. Like for example, you are from science discipline और यू आर फ्रॉम सोशल साइंस डिसिप्लिन। अगर सोशल साइंस डिसिप्लिन के आप हो तो आपको पता है कि ICSSR जो है एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट फंडिंग एजेंसी इन इंडिया for social sciences. And as far as science teachers are concerned, DST, DBT, CSR, AICT, these are the prominent. There are many funding agencies, but these are some of the prominent funding agencies. So what we should do is, whenever we will be visiting, because ये सभी funding agencies के headquarters जो है ज्यादातर दिल्ली में, capital of India. So what we should do is, whenever we will be visiting Delhi, we should spare at least one day to visit those agencies। जो जो कंसर्न जो ऑफिसर होंगे, आप उनको मिलना चाहिए। यू शुड कैरी योर लैपटॉप विथ यू, and you should have a small presentation in which you can show them what kind of research credential you have, what kind of research you are doing, and what kind of capabilities you have, so that whenever there would be opportunities, whenever there would be announcement of a particular scheme, that officer would be able to get you connected to those scheme and you will be able to apply। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब अनाउंसमेंट होता है, बट since we are not visiting website of those funding agencies openly, वो जो announcement हम मिस कर देते हैं, and then we will be missing the trend. So I mean, as far as linkages are concerned, I will strongly advise you to create that kind of linkages with funding agency। उनको बताइए कि कितने genuine researcher आप हो, क्योंकि आप अगर नहीं बताएं, क्योंकि you need to market yourself, आपको बताना पड़ेगा। So because let me tell you, funding agencies में भी people are there, they are looking for genuine researcher, मतलब उनको भी पैसा देना है।
किसी को भी नहीं, बट लाइक इफ यू आर रियली जेन्युइन रिसर्चर, इफ यू हैव रियली good credibility in your own topic, obviously they will be looking for the people like you. So you should take I mean you should make it sure that you have good connection with those people in funding agency for getting you connected to those I mean announcement. तो इस टाइप के लिंकेजेस को मैं encourage करूंगा, बट अंडर टेबल लिंकेजेस की जो बात होती है, आई डोंट थिंक दैट that kind of under table linkages are going to get you going to help you to get the project. नाउ ये जो लास्ट स्पेकुलेशन है, या ये जो मैं कहूंगा कि रियलिटी है, कि जिस कॉलेज में हम काम करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हम काम करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पर ज्यादातर हम जब भी पैसा लाते हैं, तो हमारे फाइनेंस के लोग हमें नाइदर वी गेट द प्रॉपर फ्रीडम, ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स के जो हर्डल्स है, वो इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि समय निकल जाता है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एंड जब हम मिड टर्म प्रेजेंटेशन के लिए हम फंडिंग एजेंसी को जाएंगे, तो यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। तो इसीलिए बहुत सारे टीचर जो है कभी भी प्रोजेक्ट सबमिट करने की कोशिश नहीं करते, बट आई विल एडवाइस यू टू फाइंड आउट अ वे आउट ऑफ दिस, क्योंकि दुनिया में मतलब एटलीस्ट इन इंडिया यू विल नॉट फाइंड, बिकॉज बाय एंड लार्ज हमारे इंडिया में इस टाइप का माहौल है कि आप अगर जेन्युइन रिसर्चर हो, तो यू आर गोइंग टू हैव टफ टाइम। आपको लोग सताएंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटर आपको सताएंगे, आपके प्रिंसिपल जो भी लोग हैं इर्द गिर्द आपके, वो आपको दे आर गोइंग टू ट्रबल यू लाइक एनीथिंग, और आप वो कोशिश करेंगे कि आप सक्सेसफुल ना हो। बट यू नीड टू फाइंड आउट योर ओन वे आउट ऑफ दैट, क्योंकि वो तो चाहेंगे, बिकॉज आप अगर सही मायनों में सिंसियर रिसर्चर हो, आपके पास क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो वो चाहेंगे कि भाई आप डिस्करेज हो, डिमोलराइज हो, ताकि आप प्रोजेक्ट ना लाए, आपका बायोडाटा अच्छा ना बढ़े, आपका एक इम्पैक्ट ना क्रिएट हो। सो यू शुड नॉट एंटरटेन दोज पीपल, वेदर दे आर इन एडमिनिस्ट्रेशन और योर कलीग। आप उससे आप उस टाइप के लोगों को कैसे डील करना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा, एंड वी शुड गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, सो दैट आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो यू आर गोइंग टू हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जो है प्रोजेक्ट लाएंगे, तो आपके स्टूडेंट को आप फेलोशिप दे पाएंगे, सो यू आर गोइंग टू हैव गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ यू, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इनोवेटिव रिसर्च। अदरवाइज इनोवेटिव रिसर्च करना अकेले अकेले का काम नहीं होता, इट इज अ टीम वर्क। रिसर्च अगर सही मायनों में आपको सब्सटेंशियल रिसर्च करना है, सिग्निफिकेंट आउटपुट चाहिए, सोसाइटल रिलेटेड रिसर्च करना है, तो यू नीड अ टीम ऑफ पीपल। फॉर दैट पर्पज यू नीड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। तो बच्चे तो आपके पास तभी आएंगे जब आप उनको फेलोशिप दे पाएंगे। अभी दैट इज गुड दैट नाउअडेज इन महाराष्ट्र बाय एंड लार्ज ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट वन और अदर फेलोशिप, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जो है रिसर्च प्रोजेक्ट वाज द ओनली सोर्स for getting fellowship for the student, but nowadays there are many options available, so at least research student के fellowship का कोई सवाल नहीं है, you are going to have a good team of research scholars. But as far as infrastructure is concerned, you can build your own infrastructure only when you have a funding. So in spite of a very discouraging environment in your institute, you should try to focus, and आपने कोशिश करना चाहिए कि प्रोजेक्ट कैसे आपके पास आए। Regarding, let me go ahead now. Okay, now before I start, move further, I'm going to give you some important, I'm going to introduce with the reality. The reality is, if you look at because let me tell you, fortunately I have got an opportunity to work on various project funding committees of various project funding agencies. Whatever experience I have so far, ये जो प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसीज के मीटिंग्स अटेंड करते हुए जो जो एक्सपीरियंस मुझे आया है पिछले काफी सालों से, what I learn is most of the project proposals are being rejected due to shortcomings in the quality publications.
ज्यादातर प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि इफ यू टेक सैंपल ऑफ एनी पीएचडी, एनी पीएचडी थेसिस, मतलब आप किसी भी डिसिप्लिन के, किसी भी यूनिवर्सिटीज के इंडिया में अगर आप 10 थेसिस के सैंपल अगर चूज करेंगे, तो यू विल कम टू नो दैट अराउंड 20 to 30% रिसर्चर्स आर एबल टू पब्लिश द डेटा इन गुड जर्नल। गुड जर्नल मतलब जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जर्नल जो है, बस वहीं पर वहां पर वो डेटा पब्लिश कर रहे हैं, अराउंड 20 to 30, नॉट मोर देन दैट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, किसी भी कॉलेज में जाइए, आप फैकल्टी का अगर प्रोफाइल आप रिव्यू करेंगे, तो आपको 10 फैकल्टी में से 2-3 फैकल्टी मेंबर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जो जेन्युइन रिसर्च, बहुत बड़े ऑनेस्टली रिसर्च करते हैं, एंड देन दे आर पब्लिशिंग डेटा इन गुड जर्नल। अराउंड 70 to 80% पीपल, ऑब्वियसली उनके पब्लिकेशन अच्छे जर्नल में नहीं रहेंगे। डज इट मीन दैट ऑल दो 70 to 80% पीपल आर नॉट जेन्युइन, या वो बिल्कुल ही करना नहीं चाहते? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ट्रूली स्पीकिंग, आउट ऑफ दोज around 70% people, you will find that if you could do the proper analysis of all those 70% people, researcher I mean to say, you will come to know that again out of those 70%, अराउंड 20 to 30% पीपल आर रियली जेन्युइन, हार्ड वर्किंग भी है, बेचारे काम भी करते हैं, बट समहाउ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, वो डेटा जो है अच्छे जर्नल में पब्लिश कर नहीं पा रहे हैं। मतलब रिसर्च तो वो सही कर रहे हैं, जेन्युइननेस भी है, कमिटेड भी है, सिंसियरिटी भी है, बट समहाउ दे डोंट हैव प्रॉपर एक्सपोजर। मतलब ना तो उनके पीएचडी एडवाइजर को सही एक्सपोजर है, ना उनको है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ जनरेटिंग गुड डेटा, वो डेटा अच्छे जर्नल में सबमिट ही नहीं कर रहे। मतलब उनका इंपॉर्टेंस उनको पता नहीं है, या थोड़ा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, वो जो जो 20-30% रिसर्चर जो है, दे आर नॉट पब्लिशिंग देयर डेटा इन गुड जर्नल। रिमेनिंग जो है अराउंड 30-40% रिसर्चर, वो करना ही नहीं चाहते। मतलब उनको हम सुधार ही नहीं सकते, उनको कुछ भी करे, क्योंकि वो उनको पता है कि व्हाट दे आर डूइंग, they don't want to do good research, they want to just do the mockery and somehow complete the thesis, and don't want, they want to get up with PhD degree only। जो मैंने कहा कि आउट ऑफ ये 10 thesis, जैसे मैंने कहा कि अराउंड 20 to 30% are genuine people publishing their data in good journal, another 20-30% people are also genuine, but somehow because of lack of awareness, वो सही कर नहीं पा रहे, अच्छे जर्नल में डेटा पब्लिश कर नहीं पा रहे। उनके लिए काम करना बहुत जरूरी है। तो जब ये मानते हैं हम कि ओनली वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर पब्लिशिंग देयर डेटा इन गुड जर्नल, ज्यादातर लोग पब्लिश कर नहीं पा रहे, आइदर लैक ऑफ अवेयरनेस या करना नहीं चाहते, तो व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन? क्योंकि ओनली एक्सेप्टिंग फैक्ट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। हमें समझना पड़ेगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये लोग अच्छे जर्नल में डेटा पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, पिछले, राइट, because the whatever slides I have prepared, most of the slides I have prepared out of my own experience। तो ये जो reasons मैंने बता रहा हूँ, ये जो 7 reasons मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, these are probable reasons which I which are coming out of my own experience। तो सबसे पहला रीजन ये है कि इश्यूज इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि जब हम थेसिस, जब भी किसी भी पीएचडी का हम काम शुरू करते हैं, तो जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का जो तरीका है, वो तरीका ही हमारा सही नहीं होता। क्योंकि जब आपका फाउंडेशन सही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपका रिसर्च आउटकम भी सही नहीं होगा। इश्यूज आइडेंटिफिकेशन, जो जो रिसर्च के लिए जो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो समहाउ वी आर नॉट फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में जो तरीका हमने अडॉप्ट करना चाहिए, वो तरीका हम अडॉप्ट करते ही नहीं। जैसे कि आप देखिए, आप तो अपने आप को जरा, जब अगर आप पीएचडी, इफ यू आर पीएचडी होल्डर, और इफ यू आर पीएचडी एडवाइजर, तो आप देखिए कि किस, क्या, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज वी आर अडॉप्टिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन वी आर asking our student to do before getting registered for PhD। तो अगर देखिए, what is, हम लिटरेचर रिव्यू करवाते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू? पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स। तो गैप्स को अगर आइडेंटिफाई करना है, तो क्या हमें
हौच पौच लिटरेचर रिव्यू करके हम गैप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नए रिसर्चर हो, तो जब आप पहली बार रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग आउट ऑफ दैट इफ यू आर रीडिंग रिसर्च पेपर फर्स्ट टाइम। मतलब ज्यादा हार्डली 2-3% बातें जो है रिसर्च पेपर्स की आपको समझ में आएगी। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग, इफ यू आर फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू रीड वन रिसर्च पेपर एट ए टाइम, तो आप जब कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करना चाहेंगे तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम। क्योंकि किसी भी हालत में अगर आप आपका सिनॉप्सिस प्री पीएचडी सिनॉप्सिस अगर आप 15-20 दिन में अगर लिखते हो तो इट मींस दैट यू आर कमिटिंग क्राइम, absolutely crime, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। So you should spend at least 3 to 6 months to identify the problem, truly speaking. But if you don't do that, obviously that will lead to the substantial data, and that kind of data you will not be able to publish in good journal. तो सेकंड बात वही हुई कि इनएडिक्वेट लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है उसका एग्जांपल मैं आगे की कुछ स्लाइड में आपको बताऊंगा। इवन इफ यू डू द लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हम लोगों का सही नहीं होता। आप देखिए किसी भी स्टूडेंट को, ज्यादातर स्टूडेंट को हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस ही नहीं समझ में आता। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ पीएचडी फाइव, जब हम उनको पूछते हैं कि भाई बेटा आपका हाइपोथेसिस क्या है, तो ही ऑलवेज कम अप विद लाइक द ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे बहुत कम पीएचडी के प्रेजेंटेशन मैंने देखे कि किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर दिस वाज माय ऑब्जेक्ट हाइपोथेसिस, I started working on this. When I test my hypothesis, I could find that there were some issues. Then I went back, make the corrections in the hypothesis, again started working, and this is how I continued in my research. इस टाइप का प्रेजेंटेशन ज्यादातर पीएचडी स्टूडेंट कभी होता नहीं, बिकॉज हम वहां पर भी हम रियलिस्टिक नहीं होते हैं। वहां पर हम अप्रोच हमारा वो सही नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई अगेन अगर हाइपोथेसिस सही नहीं होगा तो आपका डेटा सब अच्छा नहीं होगा, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू पब्लिश योर डेटा इन गुड जर्नल। मान लो आपने सब कुछ सही किया, मतलब आपका लिटरेचर रिव्यू कंप्रिहेंसिव रहा है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन सही रहा, बट व्हाट एवर डेटा यू गॉट दैट डजंट हैव एनी सोशल रिलेवेंस, बिकॉज अभी आजकल अच्छे जर्नल में अगर डेटा पब्लिश करना है, इवन आपको बताऊं कि किसी भी फंडिंग एजेंसी को जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, so they are going to see whether whatever research outcome you are going to have at the end of your research project, whether that data is going to be useful for some cross section of the society। उसका सोसाइटल रिलेवेंस अगर नहीं रहेगा तो आपका प्रोजेक्ट, ना तो आपका प्रोजेक्ट फंड होगा, ना तो आपका पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश होगा। नाउ हाउ टू डू इट, आई एम गोइंग टू टेल यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मान लो ये सब कुछ सही है, बट समहाउ आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते समय कुछ बायसेस आपके थे, कुछ लिमिटेशंस थे, आप ऑनेस्ट नहीं थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ there were a lot of ambiguities in designing experiments, and moreover like if you are from social sciences, तो वहां पर हम बहुत बार डेटा सर्वे करते समय क्वेश्चनर जो हम फ्रेम करते, वो क्वेश्चनर फ्रेम करने में ही हम गलतियां करते। सो इफ यू आर नॉट प्लानिंग योर एक्सपेरिमेंट, प्लानिंग योर द स्केड्यूल प्रॉपरली, द आई मीन जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा वो अगर सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली you are not going to get good data and you will not be able to publish your data in good journal। मान लो ये सब सही है, बट somehow आपने because एक एक रीजन ये भी होगा कि आप डेटा अच्छा जनरेट ना करने का एक रीजन ये भी होगा कि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो वो आपकी स्ट्रेंथ है ही नहीं। समहाउ आपको ऑप्शन नहीं था, कोई रिसर्च गाइड अवेलेबल है, उनका टॉपिक कुछ अलग है, आपकी एक्सपर्टीज कुछ अलग है, आपका ना तो इंटरेस्ट उसमें है, ना तो आपने कुछ प्रायर आपकी क्रेडिबिलिटी उस एरिया में है, उसके बावजूद भी कोई ऑप्शन नहीं है बोलकर आप पीएचडी करना चाहते हो। सो इट मींस दैट यू आर गोइंग टू आस्किंग ट्रबल। तो ट्रूली स्पीकिंग ये जो इम्प्रॉपर मैपिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिसर्चर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेट विद प्रॉब्लम की बात मैं कर रहा हूं, ये इसीलिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि whether do I have adequate skills to or credentials to address those issues or address those problems। अगर नहीं है, क्योंकि ठीक है इशू तो है, प्रॉब्लम तो सही है,
इमर्जिंग भी है, वहां पर करना भी जरूरी है, प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, बट आई डोंट हैव दोस स्किल्स, आई डोंट हैव दैट क्रेडेंशियल टू एड्रेस that problem. So in that case, you will not be able to generate good amount of data. I mean, अच्छा डेटा आप पब्लिश जनरेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा वो काम में. Obviously, that will lead to substantial, I mean, the substandard data, and वो फिर अच्छे जर्नल में नहीं जाएगा. मान लो सब कुछ सही है, 1 to 6 स्टेप आपने बड़े जेन्युइनली किए हैं, बट समहाउ आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स आपके पास नहीं है, somehow you will not be able to convince reviewer. So as a result of that, सब कुछ सही होने के बावजूद भी जो रिव्यूअर को जो है आपका डेटा में इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, एंड ही विल बी रिजेक्टिंग योर रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट, और जो रिसर्च प्रपोजल जो जाएगा वो भी आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इम्पैक्टफुल नहीं होगा, इसीलिए आपका प्रपोजल भी रिजेक्ट हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई the people are not able to publish their data in good journal. Now, when let us come to the drafting skills. I mean, the key aspect of drafting research project proposal. As far as like ये जो तीन एस्पेक्ट जो है, आई एम जस्ट लुकिंग इनटू द पर्सपेक्टिव ऑफ रिव्यूअर. जब रिव्यूअर के पास ये प्रोजेक्ट जाएगा तो व्हाट रिव्यूअर इज गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. मतलब आपका प्रपोजल जब रिव्यूअर देखेगा तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपके प्रपोजल में. देयर आर 3 थिंग्स ही इज गोइंग टू लुक इनटू. नंबर 1, नॉवेल्टी. नंबर 2, सोशल रेलेवेंस. नंबर 3, आपके पास क्या क्रेडिबिलिटी है. राइट, ये 3 एस्पेक्ट जो है हमें हमारे प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट करते आने चाहिए. नाउ हाउ टू डू इट, लेट अस सी. लेट अस स्टार्ट विद द नॉवेल्टी. नॉवेल्टी को कैसे इंश्योर करना. देखिए माय फ्रेंड, नॉवेल्टी ये वर्ड बड़ा आसान है, बड़ा परिचित है हमें सभी, हम सभी को. हम सभी इंश्योर करते या क्लेम करते कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं दैट इज नॉवेल. सभी लोग क्लेम करते, बहुत बार लिखते भी है कि व्हाट एवर आइडिया आई एम प्रपोजिंग इट इज altogether novel idea, nobody else have so far dealt with this particular topic, and that is why I am the only person who is dealing with this. ये claims बहुत बार करते, but the problem is how do we substantiate our claim. तो इसीलिए एक तरीका होना चाहिए, रिफ्लेक्शन उसका कैसे है, आना चाहिए हमारे प्रपोजल में या मैन्युस्क्रिप्ट में. उसका एक तरीका है. नंबर 1, you need to do very rigorous literature review. Rigorous literature review in terms of quality and in terms of quantity, दोनों. in terms of quantity मतलब काफी, मतलब बड़े नंबर आपने, मतलब नंबर ऑफ रिसर्च पेपर, ऐसे नहीं कि 5-10 पेपर रिव्यू करके आप गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसा हो नहीं पाएगा. एटलीस्ट लाइक whenever you are talking about identification of gaps, you need to at least review around 100 research papers. So 100 research paper would be a combination like ओल्ड रिसर्च पेपर भी हो गए, रिसेंट पास्ट के भी हो गए, एंड देन वेरी रिसेंट. जैसे कि मान लो आप अगर फरवरी 2024 में अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो यू मस्ट बी एबल टू रिव्यू पेपर्स टिल जनवरी 2024. तब कहीं आपके समझ में आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग एल्सवेयर. Now, this is about quantity. How about quality? Now, in order to ensure quality of those research paper which you are reviewing, उसके लिए सबसे important ये है कि आपको आपके स्टूडेंट को या खुद को, अगर आप खुद रिसर्चर हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट के मायने क्या है. व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन विच आई कैन से दैट दिस इज द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट. तो वो मायने समझना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले जिस टॉपिक में मैं काम कर रहा हूं, आई मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट 10 रिसर्च जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट. तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्या पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे मैं कहूंगा कि भाई ये चलो ये 10 पेपर जो 10 जर्नल जो है इस ये इंटरनेशनल रेप्यूट के हैं. तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि हाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स. अब मान लो आपको समझ में आया कि पैरामीटर्स क्या है, आपने 10 जर्नल्स को आइडेंटिफाई किए हैं, एंड देन यू स्टार्टेड रिव्यूइंग पेपर फ्रॉम दोस 10 जर्नल्स. आर यू गोइंग टू एंश्योर नॉवेल्टी? नो. लाइक उतना करके नहीं होगा. आपको आगे चलकर एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये करनी चाहिए कि वॉट एवर जर्नल्स यू हैव आइडेंटिफाइड, 10 जर्नल, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो 10 जर्नल्स है उसमें जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं
how many research paper from those journals are from your own topic which you are going to research. मतलब जिस टॉपिक में आप रिसर्च करना चाहते हो, आउट लाइक उस टॉपिक से रिलेटेड कितने पेपर्स वो जर्नल में पब्लिश हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई अच्छा जर्नल मुझे मिला है, लेकिन ओनली 2 to 3% ऑफ पेपर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल आर फ्रॉम माय रिसर्च टॉपिक, so that journal is not going to be good for me. So what I need to ensure is I need to make it sure that at least 50 to 60% of research papers should be from my रिसर्च टॉपिक. तब कहीं मैं लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स को रिव्यू कर पाऊंगा, तब कहीं मैं देख पाऊंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, तब कहीं मैं आइडेंटिफाई गैप्स को सही मायनों में मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा. नंबर, अगर इतने करने से मैं इंश्योर करूंगा नॉवेल्टी? ना, स्टिल नो. लाइक द लास्ट स्टेप वुड बी you need to identify the potential research group in the specified focus area across the globe. ये क्यों जरूरी है मैं बताऊं. जैसे कि आपको, जैसे कि मान लो आप औरंगाबाद में हो, छत्रपति संभाजी नगर में आप काम कर रहे हो, एंड वट एवर टॉपिक यू हैव, लाइक ये पहले सब कुछ किया आपने, मतलब आपने बहुत अच्छे जर्नल्स को आइडेंटिफाई किए, फोकस एरियाज के जर्नल आपने इंश्योर किए कि ज्यादातर 50 से ज्यादा परसेंट पेपर आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं, एंड देन यू हैव 100 odd papers you have identified, downloaded, started doing review. ओके, एंड देन कॉम्प्रिहेंसिवली आपने देखा है कि लोगों ने क्या काम किया, उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स दे हैड, व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन दे हैड, व्हाट काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग्स इन देयर investigation. You also identify that shortcomings as well, and then that will help you to prepare a comprehensive plan of your own research. लेकिन एक बात अगर आप मिस कर दिए, मान लो आप जिस टॉपिक में काम कर रहे हो, उस टॉपिक में काम करने वाले रिसर्चर्स दुनिया में कहाँ कहाँ है, ये अगर आपको पता नहीं है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लेटर, आज तो आप सही रास्ते पे हो, बिल्कुल नथिंग रॉन्ग इन योर ट्रैक, बट whenever you be going ahead you may end up with the trouble. तो कैसे? जैसे कि मान लो आपने जिस कॉम्प्रेहेंसिव, जिस मेटिकुलसली, जितना एक्सटेंसिव तरीके से आपने लिटरेचर करना था आपने कर दिया, आपने सब कुछ किया, बट लेकिन आप अकेले थोड़ी ना है दुनिया में कि इस टाइप का एक्सटेंसिव और बड़े सीरियसली काम करने वाले. देयर आर मेनी पीपल. तो मान लो कि आप जिस टॉपिक में काम कर रहे हैं, उसी टॉपिक में काम करने वाला दूसरा एक ग्रुप है जो किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में बसा है, एंड दे आर आल्सो लाइक, लेट अस अज्यूम दैट लाइक मान लो आपने फरवरी में ये कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू किया है, तो उन लोगों ने भी उसी उसी समय किया. तो जो गैप्स आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उन्होंने भी जो वो गैप्स आइडेंटिफाई किए. जिस लाइन पे आप काम कर रहे हो सकता है उसी लाइन पे वो भी काम कर रहे हैं, बट after identifying those gaps, you took around 5 to 6 months to do experiment or collect the data, analysis of data and drafting of manuscript. 6 महीने के बाद आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर रहे हो, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जो आपको पता ही नहीं है, वो थोड़ा आपके आगे था, उन्होंने 4 महीने में काम खत्म किया, एंड दे पब्लिश डेटा वेल बिफोर यू. 5 महीने में उन्हें डेटा सबमिट किया, डेटा पब्लिश किया, आप छठे महीने में आप जो सबमिट कर रहे हो, बाय दैट टाइम यू लॉस्ट द नॉवेल्टी. क्योंकि जब शुरुआत आपने की थी इट वाज नॉवेल आइडिया, बट 6 महीने के बाद आपने जब देखा तो किसी और ग्रुप ने आपसे पहले डेटा पब्लिश किया एंड यू लॉस्ट द नॉवेल्टी. सो अगर आपको पता नहीं है तो यू आर गोइंग टू बी एंड अप विद ट्रबल एट द एंड ऑफ द स्टोरी. बट इफ यू कुड नो दैट कहाँ कहाँ जो प्रोमिनेंट पोटेंशियल रिसर्च ग्रुप इंडिया में और इंडिया के बाहर जो काम कर रहे हैं वो आपको पता है, तो आप क्या करेंगे कि यू विल बी मेकिंग इट श्योर दैट कि उनका जो रिसर्च स्कोप है या जो भी एक्टिविटीज है वो आपके आगे ना हो, बिकॉज यू विल बी कीपिंग ट्रैक ऑफ देयर रिसर्च. So that is why I always say that literature review is a continuous process. एक बार करके वो स्टॉप नहीं होगा, because after every year, so after every month I would say you need to keep yourself updated and see like what is happening elsewhere. तो आपने अगर उनका रिसर्च ट्रैक किया होता तो ऑब्वियसली आपको पता चलता था कि यार ये लोग भी काम कर रहे हैं, तो you must have changed direction of your research and you should have could have ensured द नॉवेल्टी. एंड देन 6 महीने के बाद जो आपको जो समहाउ सेटबैक मिला है वो सेटबैक आपको ना मिलता. सो इफ यू कुड फॉलो दिस काइंड ऑफ रिगरस स्टेप्स इन डूइंग
लिटरेचर रिव्यू, ऑब्वियसली नॉवेल्टी कुड बी एंश्योर, एंड आपको कभी भी पब्लिकेशन में कभी प्रॉब्लम, ना तो पब्लिकेशन में प्रॉब्लम होगा, ना तो आपके रिसर्च प्रपोजल कभी जब भी आप सबमिट करेंगे वो रिजेक्ट होगा. नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू एंश्योर सोशल रिलेवेंस इन द प्रोजेक्ट प्रपोजल. अब बहुत बार या तो रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट, ये दोनों पैरेलल चलेंगे, आइदर रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट या रिसर्च प्रपोजल. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं. मतलब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद हम सोचते हैं कि भाई जो भी रिसर्च आउटकम आया है, अभी नाउ लेट मी सी हाउ दिस रिसर्च आउटकम कैन बी यूजफुल फॉर सम क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ऐसे नहीं होता. आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि क्या आप जो रिसर्च करने वाले हैं, जो रिसर्च आउटपुट जो आपके पास आने वाला है, वेदर दैट आउटकम इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर एड्रेसिंग वन और अदर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले जो है आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, व्हाट आर, बिकॉज जो स्वॉक एनालिसिस हम इंस्टीट्यूट का करते हैं उस टाइप का स्वॉक एनालिसिस हमें हमारा भी करना पड़ेगा. सो व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, and then what are the issues pertaining to area of my expertise. तो मेरे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगी, लिस्ट ऑफ इश्यूज होंगे, एंड देन आई विल बी डूइंग प्रॉपर मैपिंग कि क्या इश्यूज है, मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज है, कौन सा इश्यूज मैं एड्रेस कर सकता हूं और कौन सा नहीं कर सकता हूं. if I could do that right in the beginning, तो क्या होगा, मेरे पास इश्यूज रहेंगे मेरे टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन प्रायोरिटीज भी मुझे सेट करनी आएंगी, क्योंकि बेस्ड ऑन माय एक्सपर्टीज आई विल बी एबल टू मैप. मैपिंग होने के बाद देन आई नीड टू डिसाइड विच टॉपिक शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी. इट कुड बी बेस्ड ऑन द इमरजेंसी या नीड ऑफ द आवर और अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत बार ऐसा होगा कि भाई टॉपिक तो बहुत सही है, ये करना भी जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है, बट समहाउ आई डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट. तो उस टाइप का टॉपिक आप अगर लेंगे तो ऑब्वियसली यू एंड अप विद द सब्सटेंशियल, आई मीन द सबस्टैंडर्ड डेटा. तो वो नहीं करना चाहिए. इफ यू कुड डू दिस, इफ यू कुड अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, आई एम श्योर you will be able to ensure societal relevance in your investigation and at the same time in your proposal too. व्हाट अबाउट क्रेडिबिलिटी, कैसे आप क्रेडिबिलिटी इनकलकेट करेंगे या इंश्योर करेंगे आपके प्रपोजल में. जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको अगर किसी से पैसा लेना है, किसी फंडिंग एजेंसी से, तो फंडिंग एजेंसी वाले देखेंगे ना कि आपके पास क्या क्रेडेंशियल है. क्या आप वो प्रपोजल, आपको अगर 50 लाख अगर देना वो चाहते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी यू हैव. तो वो क्रेडिबिलिटी आपको रिफ्लेक्ट करते आना चाहिए. तो सबसे पहले तो देखना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी आई हैव द टॉपिक विच आई एम प्रपोजिंग. आप मान लो रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो, तो टॉपिक जो आप प्रपोज कर रहे हो, क्या वो रिसर्च टॉपिक में आपके पास एडिक्वेट नंबर ऑफ पब्लिकेशन है. सबसे पहले देखिए, अगर पब्लिकेशन नहीं है, पब्लिकेशन है तो किस लेवल के पब्लिकेशन है, अच्छे जर्नल्स के हैं या सबस्टैंडर्ड जर्नल के हैं, साइटेशंस उनके कितने हैं. पहले आप देखिए कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, राइट. अगर आपके पास मान लो पब्लिकेशन नहीं है, पब्लिकेशन है तो फिर कहां पर है, साइटेशन कितने हैं, नहीं है तो क्या फिर आपके पास प्रायर नॉलेज है प्रपोज टॉपिक में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डील विद दैट टॉपिक. तो दैट शुड बी, आई मीन यू मस्ट बी एबल टू रिफ्लेक्ट दैट इन योर प्रपोजल. तो पब्लिकेशन का अगर अगर स्ट्रेंथ नहीं है, तो प्रायर नॉलेज आपके पास है क्या, तो हाउ टू रिफ्लेक्ट दैट प्रायर नॉलेज, उसका क्या 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 आवाज येत नाही सर. नो साऊंड सर, आवाज येत नाही. सर आवाज येत नाहीये. आय थिंक सर लेफ्ट झालेत.
सर लेफ्ट चालेगा? हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो अमोल सर. सर आवाज येतोय. हा सर, लेफ्ट झालेत वाटतं. काय माहिती पण आपला आवाज येतोय. Hello. Yes, sir. Sir. Oh, I'm sorry because my connection was lost. नो प्रॉब्लेम सर. आवाज येतो आता. येतो येता? ओके ओके. हेलो हेलो. येस सर, आवाज येतोय. सर Yes, sir. Yes, आवाज sir. येतोय. आवाज येतो. आवाज येतो. आवाज येत आहे. ओके. स्क्रीन दिसते तुम्हाला? हो 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 सर, सर. हो दिसते सर. दिसते. Yes, sir. दिसते. Okay. I'm sorry. Like I said, like these are the three important aspect of drafting research proposal. Okay, I have discussed. Is there anything missing? Last miss केले का credibility विषयी मध्ये कट झालं होतं का? Sir, page number 9 was going on about credibility. Oh yeah. Yeah. This was going on, na? Yes, sir. Yes. हा सर, So ओके सर. हाँ ओके. सो ये पर झालंय का हे सर्व पॉइंट यावरचे? तुम्हाला म्हणजे मला काय डिस्कनेक्ट वाटतं? कधी झालं माझ्या लक्षात नाही आलं. व्हायला नाही, 2 झाले वरले. फक्त 2च झाले. ओके ओके ठीक है. तो व्हाट आई वाज टेलिंग, द क्रेडिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि जब हम whenever we are expecting funds from funding agency, the funding agency is going to see what kind of credential we have in that particular area, right? So credential जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि research papers, published research papers is going to be a prerequisite for getting funding from any funding agency. तो हमें देखना पड़ेगा कि what kind of research publication I have सबसे पहले. तो क्या जिस टॉपिक में मैं प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कर रहा हूं, डू आई हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, नंबर 1. अगर है तो फिर वो किस टाइप के पेपर पब्लिश है, वेदर दोज पेपर्स आर फ्रॉम स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स या वो सब स्टैंडर्ड जर्नल्स है. अगर स्कोपस इंडेक्स है तो फिर साइटेशंस उसके कितने हैं. सो आप अपने आप को देखिए कि कहां पर आप ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट का आप कर सकते हो, राइट? इफ यू डोंट हैव गुड पब्लिकेशंस या पब्लिकेशन है नहीं, तो देन यू नीड टू सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रायर नॉलेज यू हैव इन द प्रपोज टॉपिक. मान लो वहां पर अगर थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम है तो देन, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रायर नॉलेज तो इंपॉर्टेंट रहेगा वेदर यू हैव पेपर पब्लिश और नॉट. बट पेपर नहीं है तो प्रायर नॉलेज आपको बहुत सिग्निफिकेंटली हाईलाइट करना पड़ेगा. या तो अगर मान लो आपके पास आप you must have done earlier project and you have created some infrastructure, that could be again like added advantage for you कि आप बता सकते हो कि ये मैंने पहले प्रोजेक्ट में I have created this infrastructure which can be used in this new project. I don't need this, I need like some another infrastructure. इसके ये पहले जो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर मैंने फाउंडेशन काम किया है, कुछ प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन मैंने किया है, जिसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि नाउ आई कैन इनिशिएट दिस न्यू प्रोजेक्ट. सो दिस काइंड ऑफ जो आइडेंटिफिकेशन है अपने क्रेडिबिलिटी का, वो करना बहुत जरूरी है. एंड देन यू नीड टू एंश्योर दैट दिस वट एवर क्रेडेंशियल यू हैव, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर प्रपोजल, राइट? नाउ मैं आपको बताना चाहूंगा कि whenever we are talking about the quality paper, quality journals, इम्पैक्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैं क्विकली आपको इम्पैक्ट फैक्टर क्या है बताऊंगा. whenever you are talking about 2022 impact factor,
2022 का, या तो लेट अस सी लाइक 2024, impact factor always measure the citations of last 2 years, preceding last 2 years. तो मान लो 24 का आप इम्पैक्ट फैक्टर निकालना चाहते हैं किसी भी जर्नल का, तो क्या फॉर्मूला होगा? ए बाय बी. व्हाट इज बी? बी इज द टोटल नंबर ऑफ, बी इज द डिनोमिनेटर which is a total number of citable items published by that particular journal during last 2 preceding years. जैसे कि 2024 में अगर 24 का अगर निकाल रहे हैं हम, तो 22 या 23 में हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स दैट पर्टिकुलर जर्नल्स हैव पब्लिश. मान लो अगर एक कोई जर्नल है, साल में 12 इश्यूज है, एक इश्यू में 12 पेपर्स है, तो एक साल के 120 144 होंगे, 2 साल के 288 होंगे. सो दिस 288 नंबर वुड बी फिक्स इन द डिनोमिनेटर. एज फार एज न्यूमरेटर इज कंसर्न, न्यूमरेटर क्या है? ए इज out of those 288 articles which were published in 2022 and 23, how many of them got some citation in 2024? अगर 24 का हम निकाल रहे तो अगर मान लो 288 के आउट ऑफ 288 सभी को एक बार साइटेशन मिला है, तो इन द न्यूमरेटर विल बी 288, डिनोमिनेटर विल बी 288, इंपैक्ट फैक्टर विल बी 1. तो आप देखिए कि अगर एक बार साइटेशन मिला तो एक इंपैक्ट फैक्टर होगा, 2 बार साइटेशन मिले सभी आर्टिकल्स को तो 2 इंपैक्ट फैक्टर होगा. सो मोर द साइटेशंस मोर विल बी द इंपैक्ट फैक्टर. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि साइटेशन उन्हीं जर्नल को मिलेगा जिनके रिसर्च आर्टिकल में कुछ इनोवेटिव कंसेप्ट है, जो रिपीटेबल डेटा उस जर्नल में अगर है, कॉपी पेस्ट टाइप अगर जर्नल में डेटा है, तो नोबडी इज गोइंग टू रेफर दोस जर्नल्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा है वो जर्नल्स का एक्सेप्टेंस ज्यादा है, डेटा उससे अच्छा मिलेगा. आप जो नॉवेल्टी इनकलकेट करने की कोशिश करते हो, दैट यू कैन एंश्योर. नाउ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंपैक्ट फैक्टर. क्योंकि आजकल बहुत सारे जर्नल्स हैं क्लेम करते हैं कि भाई हमारा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, लाइक. लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर आपको सही मायनों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो रिकग्नाइज जो रेपुटेशन की बात मैं कर रहा हूं, वो जर्नल को अगर ढूंढना है, तो यू नीड टू सी ओनली थॉमसन रूटर इंपैक्ट फैक्टर, जो कि आपके यूजीसी कैस में जो हमारा रिसर्च स्कोर ऑगमेंटेशन का जो प्रावधान है, वहां पर वो लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इंपैक्ट फैक्टर जो है थॉमसन रूटर का है, तो यू कैन गेट योर रिसर्च स्कोर ऑगमेंटेड. तो वही है जो पहले इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एजेंसी देखा करती थी. नाउ दैट थॉमसन रूटर इंपैक्ट फैक्टर इज बीइंग मेंटेन बाय द क्लैरिवेट एनालिटिक्स. रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो सोशल साइंस के टीचर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल जो है, स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस के जर्नल है, ये खाली साइंस के टीचर्स के लिए है, साइंस के रिसर्चर के लिए है. हमारे लिए वो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. बिकॉज यू विल सी देयर आर मेनी डेटाबेसेस wherein like you can have the web of science and scopus papers from social science as well. If you look at this, the first row आप देखिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी साइटेशन इंडेक्स, ये सभी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है उसी के सब जर्नल्स है. आप उसका देखिए सपोर्टर कौन है? वेब ऑफ साइंस. वेब ऑफ साइंस इसको जो है बैक करता है. देन इफ यू लुक एट स्कोपस, स्कोपस इज मल्टी, यहाँ सभी सब्जेक्ट आएंगे. एंड सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, ये ओनली और सोशल साइंस पीपल. अगेन इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये वेब ऑफ साइंस ही सपोर्ट करता है. आपको साइंस साइटिस इंडेक्स भी है, वो साइंस टीचर्स के लिए. बट लाइक स्कोपस एंड स्प्रिंजर, दीज आर मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेसेस वेरिन लाइक ऑल जर्नल्स आर बीइंग कंसीडर्ड. जो मैं जर्नल की मैट्रिक्स की बात कर रहा था, देर आर 5 डिफरेंट जर्नल पैरामीटर्स जिसके तहत हम कह सकते हैं कि भाई ये जर्नल जो है वेरी स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल रिप्यूट का है. नंबर 1 इज ईयरली इंपैक्ट फैक्टर, जो पिछले 2 साल के साइटेशन का रिव्यू करता है. साइट स्कोर इज अनदर पैरामीटर, जो पिछले 3 साल के साइटेशन का रिव्यू करता है. 5-year impact factor is the third parameter which will take a review of last 5-year citations. HJR is the called Samago general rank, which take care of both quality as well as quantity. Only citation नहीं, but citation कहाँ से आते, that also going to be counted in HJR. HJR जो पैरामीटर होगा दोनों क्वालिटी एंड क्वांटिटी को जनरेट करेगा. SNP is सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर. बहुत बार ऐसा होता है, कुछ जर्नल्स होते हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि
कुछ आर्टिकल्स है, बहुत सारे साइटेशंस होते, कुछ आर्टिकल्स को बहुत लिमिटेड साइटेशन होते। स्नीप इज गोइंग टू नॉर्मलाइज दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एंड देयरफॉर आप अगर किसी भी जर्नल के वेबसाइट पे अगर जाओगे, एंड इफ यू कुड सी दैट ऑल दीज 5 पैरामीटर्स ऑन द टॉप ऑफ दैट फ्रंट पेज और समहाउ ऑन द in the index of that journal, it means that that particular journal is really जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। ये पैरामीटर्स अगर नहीं रहेंगे, समझ लेना कि ये बिल्कुल सबस्टैंडर्ड जर्नल है। सो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स, दोज वेदर यू आर फ्रॉम साइंस डिसिप्लिन और सोशल साइंस डिसिप्लिन, आपको मैं बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है कि जेन्युइन रिसर्चर होने के बावजूद भी वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड वो अच्छे जर्नल में डेटा सबमिट नहीं करके अपने आप की जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट होने से अपने आप को रोकते हैं। So don't do that. You try to don't publish data in any other journal other than Scopus and Web of Science Index journal. बहुत सारे जर्नल्स है सोशल साइंसेस की भी, देखिए ये जर्नल की लिस्ट है जहां पर मोर देन 1000 जर्नल आपको दिखाई देंगे। कुछ स्नैपशॉट है कुछ जर्नल्स के, जिसके वेबसाइट पे अगर जाओगे तो सभी पैरामीटर जो मैंने बताए वो आप देख पाएंगे, जैसे कि दिस इज इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, this annual review of law and social science, this is a journal of finance, this is humanity and social science review, and then this is contemporary education dialogue, and then this is physical political science research and methods, this is commonwealth and comparative politics, this is public administration and review, this is journal of contemporary drama in english, this is research in drama education, dance research journals. And then as far as the social science, the science disciplines concerned, there are plenty of research journals from Scopus Index for science and technology teachers. Like these are some of those, like census actuators. These are some of those. There are many. There are many. So I thought I should tell you about that. Now coming back to the overall organization of project proposal, जब हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, 3 एस्पेक्ट हमें मोटे मोटे तौर पे देखने पड़ेंगे। व्हाट इज साइंस, मैनेजमेंट एंड बजट ऑफ माय प्रपोजल। साइंस का मतलब ये है कि जो आइडिया मैं प्रपोज कर रहा हूँ क्या वो फिजिबल है, क्या वो विद इन टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर पाऊंगा, राइट। फिजिबिलिटी एंड टाइम स्केल दैट टॉक्स अबाउट द साइंस ऑफ योर प्रपोजल। मैनेजमेंट की जहां पर बात आती है, इसका मतलब कि वट एवर पर्सनल मैन पावर यू नीड, वट एवर रिसोर्सेज यू नीड, वट एवर collaboration you need, whatever facility you need, whether you have all those aspects, whether you have taken care of all those aspects while drafting your proposal, that comes under management. And third है budget, जो भी budget आपने propose किया है, whether you have given proper justification and whether you have ensure transparency in proposing budget, that is going to be taken care of by reviewers. So these are 3 aspects of any project proposal. And then I'm going to tell you, this is going to be overall organization of research proposal. किसी भी फंडिंग एजेंसी का थोड़ा सा इधर उधर होगा, but overall this is going to be start with title, abstract, background, hypothesis, objectives, methodology, work plan, budget, and then outcome, beneficiaries, bibliography, and some annexures. So this is going to be a template or overall organization of any research proposal. Let us start with the title. Now, whenever we are talking about title need to be attention grabbing. Title need to be attention grabbing. Try to keep it as short as you can. There is no thumb rule as such, but on an average, it should be around 150 character. कुछ वर्ड्स है फिलर वर्ड जो यूजुअली हम हमारे थीसिस के टाइटल में या प्रोजेक्ट के टाइटल में देखते हैं, जैसे केस स्टडी ऑफ, इफेक्ट ऑफ, कंपैरिजन ऑफ. These kind of filler words are not at all expected in title of either research paper or your project, right? Complete sentence नहीं होना चाहिए, abbreviations use नहीं करने चाहिए. These are some of the rules. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा आपके सामने, जैसे कि these are example of good title, जो attention grabbing जो मैं कह रहा हूँ, this is example of those attention grabbing title. देखिए पहला टाइटल, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सीईओ फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. अब देखिए कितना सीधा सरल है, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सीईओ फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. अब देखिए, अब एक बात ध्यान में रखिए कि जब आपका प्रोजेक्ट आपके रिव्यूअर के हाथ में जाएगा, ही इज गोइंग टू फर्स्ट सी व्हाट टाइटल यू हैव.
वो टाइटल बहुत अगर क्राउडेड होगा, बहुत लेंदी होगा, बहुत कंफ्यूजिंग होगा, so he is going to create wrong impact about your project proposal. तो वहां से आपको केयर करना पड़ेगा कि आपका टाइटल अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। अब देखिए जैसा कि ये पहला टाइटल है, किसको वो कैसा बेकार कैसा हो सकता है, देखिए जैसे कि डिटरमाइनिंग द मैकेनिज्म ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सीईओ as per prevailing governmental regulation and political influence in actual appointment of CEO and other authorities of institution and its impact on overall functioning of institution. देखिए पढ़ते पढ़ते भी मुझे मतलब तकलीफ हो रही है। तो इतना अगर लेंदी टाइटल होगा तो बेचारा वो रिव्यूअर बिल्कुल ही आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल फेंक देगा। अब देखिए इसी टाइटल को हमने कैसे किया, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सीईओ फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। दूसरा टाइटल, अब देखिए लेंदी टाइटल, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ पीपल having various opportunities and challenges in earning through their conventional and non-conventional options, the age group of 30 to 50 and its impact on their livelihood. देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हम बहुत बार हमें लगता है कि यार सब कुछ होना चाहिए हमारे टाइटल में, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। अब देखिए इसी को हम शॉर्ट में कैसा कर सकते हैं, सोशल स्टेटस ऑफ फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज एंड प्रिविलेज पीपल, वेरी अटेंशन ग्रैबिंग। सब कुछ हम टाइटल में नहीं आना चाहिए क्योंकि आगे हमारे पास समय है उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द हिंट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है हम बहुत बार क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में बहुत कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। नाउ एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी, कुछ कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट होता है, कभी कभी समरी होती है। नाउ नाउ समरी, प्रोजेक्ट की समरी, अगर पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट बताऊं, abstract में like it could be abstract of your research paper or it could be abstract of your रिसर्च प्रपोजल। सबसे पहले आप देखिए कि जब भी ये आपका प्रपोजल रिव्यूअर के पास जाएगा तो वो abstract से ये जानना चाहेगा कि भाई आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो और क्या आपको ये करने से क्या मिलेगा। मतलब what you are going to do, how you are going to do and what you are going to achieve। बस ये तीन चीजें आप अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करिए। तो आपको लिखना पड़ेगा वेरी कंप्रेहेंसिवली कि व्हाट आर गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्टिव्स, what methodology you are going to use to achieve those objectives and what are going to be your expected outcome। very मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, अगर ये लिमिटेड 200-300 वर्ड्स अगर एक्सपेक्टेड है, but somewhere in summary many a times 1000 word summary is expected। So whenever we are talking about 1000 word summary, वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर थोड़ा सा सबसे पहले थोड़ा सा एक पैराग्राफ होगा, एक पैराग्राफ मतलब 20-25 लाइन का नहीं, एक 3-4 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ होगा that in which you will be explaining the importance or the introduction of some fundamental aspect of your the topic to be investigated। देन दूसरा पैराग्राफ होगा जहां पर आप लिखेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव्स आप क्या अचीव करना चाहते हो। थोड़ा सा जो ऑब्स्ट्रैक्ट से थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो क्योंकि आपके पास अभी 1000 वर्ड्स है। then you will be mentioning what kind of methodology you will be using। थोड़ा सा उसको इलिस्ट्रेट आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास लिमिट अभी ज्यादा है। and then expected outcome, क्या expected outcome है, and then you can project whatever outcome you are going to have in the project proposal at the end of your project proposal, how those outcome are going to be useful for addressing one or other issues of society। so that should be reflected in the project summary because summary will consisting of more or less 1000 words। लेकिन जब ऑब्स्ट्रैक्ट की बात आती है वहां पर बहुत ही लिमिटेड 200 या 300 वर्ड्स का लिमिट होगा। वहां पर आपको वेरी स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो और क्या आपको प्रोमिनेंटली मिलेगा। कुछ मिस्टेक जो हम एब्स्ट्रैक्ट और समरी में करते हैं, कॉमन मिस्टेक, जैसे कि हम बैकग्राउंड या मेथोडोलॉजी को बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। वी ऑलवेज गेट टेम्पटेड टू इंक्लूड फिगर्स एंड इमेजेस। बहुत बार लिटरेचर रिव्यू का रेफरेंस वहां देते हैं, वो एक्सपेक्टेड नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई अब्रिविएशंस नहीं होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट में, कोई अब्रिविएशन, सब एज पर एज पॉसिबल उसको अवॉइड करना चाहिए। Now let us go to the next aspect, introduction। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूं मैं, बिकॉज एज पर एज इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके प्रोजेक्ट का, जिसमें आपको नॉवेल्टी इंश्योर करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी, सोशल रिलेवेंस रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा एंड आपकी क्रेडिबिलिटी, तीनों चीजों को आपको वहां पर
रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। इसको हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया है पहले, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इश्यू नाउ। एंड देन कम्स टू द ओरिजिन ऑफ द प्रपोजल। जहां तक ओरिजिन की बात हम करते हैं, ओरिजिन डजंट मीन दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बहुत बार हम कोशिश क्या करते हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टेक्निकल डिटेल की देने की कोशिश करते हैं, बट ओरिजिन क्या एक्सपेक्टेड है? ओरिजिन इज हाउ दिस आइडिएशन टुक प्लेस इन योर माइंड। मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में कैसी आई। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल, बहुत बार मैं एग्जांपल देता हूँ ज्यादातर स्टूडेंट को और टीचर्स को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें मेरे पास कुछ क्रेडिबिलिटी है, कुछ पेपर्स है, पिछले काफी सालों से या कुछ सालों से मैं काम कर रहा हूँ, राइट। एंड देन आई वेंट टू फॉर सम अटेंडिंग सम कॉन्फ्रेंस। आई वाज अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस। एक कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी थी जो फील्ड में बड़े एक्सपर्ट है, सीनियर है, वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। He was delivering talk. While delivering talk, I came across altogether new concept in his talk. So I got tempted about that concept. After the talk, I went ahead and had a discussion with that particular expert. जब मैंने इंटरेक्शन किया, उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिए, कुछ लिटरेचर रेफर करने के लिए कहा। When I went back, returned back to my institution, I gone through those literature and books and all that, and I come up with the idea that okay, this could be a good topic for me to investigate and prepare a proposal for funding agency. So this is how the story is going to flow. So you need to create a story how this idea got stuck up to your mind, that need to be mentioned in the origin of the proposal. Then comes to the hypothesis। जैसे मैंने कहा, बहुत बार है कि हम हाइपोथेसिस में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो यू नीड टू वेरी क्लियरली स्टेट व्हाट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस यू हैव। लिमिटेड हाइपोथेसिस आप रहने दीजिए, सोशल साइंसेस में बहुत ज्यादा नंबर हाइपोथेसिस देने की कोशिश करते हैं, बट इन साइंसेस वी शुड हैव ओनली वन वेरी क्लियर कट कंसाइज हाइपोथेसिस। एंड हाइपोथेसिस शुड नॉट बी ओपन एंडेड, इट शुड बी टेस्टेबल। हमें वो इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ओपन एंडेड नहीं है, एंड यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई इट। जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि इवन लाइक अल्टरनेट अप्रोच भी हमें हाइपोथेसिस देते समय थोड़ा नीचे एक एडिशनल पैराग्राफ हम लिख सकते हैं, बिकॉज whenever you will be going for defend, they are going to ask you, भाई जो आप प्लान बता रहे हो, if somehow for one or other reason if you could not reach there, what would be your option B? क्योंकि आपके पास ऑप्शन बी भी होना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन बी नहीं है तो लाइक मतलब, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फंडिंग एजेंसी अगर आपको पैसा देना चाहती है, तो दे वुड लाइक टू मेक इट श्योर दैट कि आपका उनका पैसा बर्बाद ना हो, राइट। तो आपके पास जो पहला ऑप्शन होगा, जो आपका टारगेट होगा, लेकिन वो इन केस ऑफ फेल्यूर, इन केस ऑफ सम इश्यूज इन बिटवीन, यू शुड हैव ऑप्शन बी रेडी विथ यू, दैट नीड टू बी मेंशन वेरी स्पेसिफिकली। देन कम्स टू द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स देखिए, हमें पता है ये स्मार्ट वर्ड, लेकिन हमें पता है कि एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड, सभी को पता है। बट जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, तब हम कोशिश ही नहीं करते कि हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक भी होने चाहिए, ये मेजरेबल भी होने चाहिए, अचीवेबल भी होने चाहिए, रेलेवेंट भी होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 3 साल के लिए प्रोजेक्ट हमारा होगा या 2 साल के लिए होगा, क्या ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे 2 साल में कंप्लीट या 3 साल में कंप्लीट होने वाले भी है या नहीं। तो ये दैट नीड टू बी टेस्ट, दैट नीड टू बी डबल चेक, ट्रूली स्पीकिंग। एंड मोर ओवर, ऑब्जेक्टिव जो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होने चाहिए, यू शुड ट्राई टू मेक इट इन बुलेट फॉर्म। ज्यादा नंबर भी बहुत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको आगे उसका टाइमलाइन देना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट यू टू हैव 6 to 10 or at the most 12 number of objectives. Don't go beyond 12. Then next would be like significance. But this is going to be last opportunity for you to impress reviewer. जैसे कि आपने सोसाइटल रेलेवेंस की बात की, जैसे मैंने बताया आपको, so this is going to be very important point where you can say that okay, this is how, like whatever data I'm going to produce, that data is going to be useful for this particular cross section of society for addressing this particular issue. And moreover, अगर ऐसा नहीं है तो आप बता सकते हो कि ये डेटा जो है फाउंडेशन हो सकता आगे आगे के रिसर्च के लिए। दैट काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन यू मस्ट बी एबल टू गिव, मेंशन इन द सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोजल।
देन कम्स टू द मेथोडोलॉजी की जब बात आती है तो ऑब्वियसली देयर शुड बी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव्स है तो देयर शुड बी 10 पॉइंट्स इन द मेथोडोलॉजी। डोंट एक्सप्लेन, डोंट इलिस्ट्रेट ईच पॉइंट, लाइक वट एवर टेक्निक्स यू आर गोइंग टू यूज, डोंट एक्सप्लेन टू मच। थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन दीजिए, लेकिन उसको पैराग्राफ फॉर्म में मत कन्वर्ट करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो इट इज गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग फॉर द रिव्यूअर एंड यू आर गोइंग टू एंड अप विद द इन द ट्रबल। देन वर्क प्लान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो टाइमलाइन होगा, जो 3 साल का जो स्केड्यूल होगा, वो आपके जो प्रोजेक्ट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि मान लो मैंने बताया था आपको कि आप अगर 20-25 अगर ऑब्जेक्टिव है तो कैसे आप 3 साल में उसको सेग्रीगेट करोगे। रादर अगर आप सोचिए, जैसे कि मान लो एक मेरा ऑब्जेक्टिव है, आई एम गोइंग टू फिनिश दैट ऑब्जेक्टिव इन लेट अस से 3 मंथ डाउन द लाइन, तो 3 महीने में एक ऑब्जेक्टिव, सेकंड 3 मंथ्स अनदर ऑब्जेक्टिव, तो मेरे 1 साल के 4 ऑब्जेक्टिव होंगे। इफ माय प्रोजेक्ट इज फॉर 2 years, objectives would be 8, so it is going to be more, I mean, better for me to convince reviewer कि भाई मैंने significant समय दिया है, but if it is for 3 years it could be 12। so आपको बड़े केयरफुली देखना पड़ेगा कि हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव्स, एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन में आपको देना पड़ेगा। देन कम्स टू द बजट। बजट में आपको कुछ हाइड नहीं करना चाहिए। वट एवर लाइक मनी यू आर आस्किंग, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपने देना चाहिए। अगर जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर बजट objective, methodology and budget should be consistent in the sense whatever technique you have mentioned in the methodology, those you must be like, वो जो टेक्निक है, either those techniques, those instruments must be already available with you, or those instruments must be available with your collaborator, or you must be asking money for that, funding for that, right? So अगर ऐसा नहीं है, neither that equipment is available with you nor with your collaborator, nor you are asking money, so obviously you are asking for trouble। तो इसीलिए जो बजट सेक्शन होगा, that need to be aligned with your methodology। ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने दिया है जिसमें रिकरिंग में मैन पावर होगा। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने प्रोजेक्ट फेलो चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको जस्टिफाई करते आना चाहिए। कंज्यूमेबल, हाउ मच कंज्यूमेबल यू वांट, ये डिपेंड करेगा कि वेदर यू आर फ्रॉम साइंस डिसिप्लिन और सोशल साइंस। उसको मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट नीड टू बी जस्टिफाइड। ट्रैवल आप वेदर जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए है, वेदर दोज ऑब्जेक्टिव्स अलाउ यू टू ट्रैवल, अगर ऐसा है तो यू कैन आस्क मनी फॉर दैट। कंटीजेंसी इज लाइक 11th आवर एक्सपेंसेस, यू कैन ऑफकोर्स एस्टिमेट दोज एज वेल। ओवरहेड तो यूजुअली 10% आपका जो रिकरिंग बजट होगा उसका 10% आपको मिलेगा, या टोटल, बहुत बार टोटल का भी 10% देते हैं, डिपेंड्स ऑन फंडिंग एजेंसी। एंड देन कम्स टू द इक्विपमेंट। जो जैसे मैंने बताया, जो इक्विपमेंट आप डिमांड कर रहे हो, इक्विपमेंट का यूटिलिटी आपके मेथोडोलॉजी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहा तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। देन मोरओवर, अगर मान लो आपके पास पहले कुछ प्रोजेक्ट्स अगर हो चुके हैं तो उसका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। कुछ इक्विपमेंट्स आपने पहले लिए होंगे तो दैट नीड टू बी स्पेसिफिकली मेंशन। आप देखिए, नाउ इन द डिजिटल ईरा आपको पूरा डेटा सभी फंडिंग एजेंसी के पास होता है कि आपके पास अगर यूजीसी का प्रोजेक्ट है, डीएसटी का है, डीबीटी का है, वट एवर यू हैव, इट इज अवेलेबल। सो डोंट हाइड एनीथिंग। ओवरलैप बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, दैट यू नीड टू एंश्योर। एथिकल कंसिडरेशन, मान लो अगर कुछ आप बायोलॉजिकल हेल्थ साइंस पे काम कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स आपके हैं, तो आपको कुछ डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको नो ऑब्जेक्शंस लेने पड़ेंगे। या अगर किसी मान लो डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में किसी लेबोरेटरी के साथ आपका कोलैबोरेशन है, तो डेटा जो है, वट एवर डेटा यू आर गोइंग टू जनरेट, you need to have proper MOU with that, like what you are going to do, when you are going to publish. So all those aspects need to be settled down before you submit your project proposal. Then when it comes to the output and outcomes and beneficiaries, आपको ensure करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई what kind of output you have, what kind of outcomes you are going to have, and who will be a beneficiaries। यहाँ पर quantitative as well as qualitative aspect भी आने चाहिए। बहुत बार हमें आउटपुट एंड आउटकम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है।
आउटपुट्स कुड बी लाइक, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है. Outputs are those results which are achieved immediately after implementing project, like for example, number of publications, patents, student train, etc. Whereas outcome would be like जो आप करेंगे उसके लॉन्ग टर्म या मिड टर्म उसके implications होंगे. Like for example, ड्यू टू पब्लिकेशन, जैसे कि मान लो ये रिसर्च प्रोजेक्ट में आपके कुछ पब्लिकेशंस हुए हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, बेस्ड ऑन दैट यू गॉट फंडिंग फ्रॉम अनदर फंडिंग एजेंसी, आपको कुछ पेटेंट मिले हैं, यू कुड कमर्शियलाइज दैट एंड यू हैव जनरेटेड लॉट ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ दैट. आपने कुछ स्टूडेंट को ट्रेन किया है, दैट हेल्प्स दो स्टूडेंट टू गेट बेटर एम्प्लॉयमेंट. सो दीज आर अ काइंड ऑफ आउटकम्स एंड देन बेनिफिशियरीज भी आपको एक्स्ट्रापोलेट करने पड़ेंगे. And then bibliography and references, whatever references you have used, don't miss out anything, because this will help you to ensure your credibility. आप अगर कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे, बहुत बार हम ऐसा होता है कुछ पेपर को हम रेफर करते हैं, बट वेन एवर वी विल बी ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम उसको रेफरेंस में डालना मिस कर देते हैं. सो दैट विल आई मीन वो आपकी क्रेडिबिलिटी को मार सकता है. मोरओवर प्लेगरिज्म से भी आपको बचा सकता है. Whatever like references you have used, if you could mention that, you will be able to avoid yourself from the plagiarism too. बहुत बार प्रोजेक्ट में रेफरीज का नाम भी हमें देना पड़ता है. whenever you will be like whenever funding agency will be asking you to choose referees, don't choose your close collaborator. आपके कॉम्पिटिटर्स, आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ हिडन कॉम्पिटिटर हमारे होते हैं, तो यू नीड टू बी इनफ स्मार्ट टू आइडेंटिफाई आपके कॉम्पिटिटर कौन है, आपके कोलैबोरेटर तो आपको पता होता है, बट डोंट चूज योर फ्रॉम एनीबॉडी फ्रॉम कोलैबोरेटर. टॉप साइंटिस्ट को भी मत आप चुनिए, क्योंकि बहुत बार अगर बहुत सीनियर साइंटिस्ट रहेंगे, आप अगर उनको रेफरी बोलकर चूज करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट जब उनके पास रिव्यू के पास जाएगा तो वो रिव्यू करके देंगे ही नहीं, एंड देन यू विल बी लाइक फंडिंग एजेंसी जो है आपका प्रपोजल पेंडिंग रहेंगी. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप देखिए कि जो XYZ जो रेफरी है वो ही शुड बी रिलेटेड टू योर प्रपोजल, एंड ही शुड बी लाइक, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई ये बंदा जो है अच्छा है, क्रिटिकल, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो है बट क्रिटिकल नहीं होगा मेरे प्रपोजल रिव्यू करते समय. तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको रेफरी का नाम चूज करना पड़ेगा. एज पर एज को इन्वेस्टिगेटर्स इज कंसर्न, अगर मान लो आप जूनियर रिसर्च स्कॉलर हो एंड आपके जो को इन्वेस्टिगेटर है वो बड़े सीनियर है, तो इट इज गोइंग टू इजी फॉर यू, क्योंकि आपका लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है. वो जो बंदा है काफी सीनियर है एंड ही इज गोइंग टू बी एडेड एडवांटेज फॉर यू. बट लेट मी टेल यू, आप ये करते समय कभी भी आपके फ्रेंड को आप को इन्वेस्टिगेटर मत रखिए अनलेस ही हैज सम स्किल सेट. सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि जो स्किल सेट आपके पास नहीं है, इफ योर को इन्वेस्टिगेटर ब्रिंग दैट स्किल सेट टू which will help you to improve the impact of your proposal, that is going to be really wonderful. Like for example के तौर पे बताता हूँ कि आप सोशल साइंस की हो, you are from economics discipline, लेकिन आप का जो प्रपोजल है, आप somehow आप जो है कुछ डेटा जो है डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन से या सोशल स्ट्रक्चर से आपको डेटा कलेक्ट करना है. तो being a person from economics, you may not be able to understand how to reach those people, how to collect the data, वो डेटा के क्वेश्चनर्स कैसे होने चाहिए. बट द पर्सन फ्रॉम सोशियोलॉजी, he will be the better person to help you, to assist you. So if you are missing some skill set and your co-investigator bringing those skills to you, it is going to be good. So that kind of co-applicant should be identified. Regarding CV, आपको एग्जैगरेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बहुत बार जो है हम एग्जैगरेट करते, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस. देखिए जैसे कि मान लो मेरा अगर पेपर पब्लिश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका तो डिटेल्स मुझे देना ही पड़ेगा. बट समहाउ अगर मान लो मेरा पेपर इम्प्रेस है, मैं लिख सकता हूँ कि मैं टाइटल लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई दिस इज इम्प्रेस और दिस इज कम्युनिकेटेड और एक्सेप्टेड. लेकिन आपको मैं बताऊं, ये अगर रियलिटी है तो सही है, लेकिन अगर आप एग्जैगरेट कर रहे हो अपने आप को तो क्या होगा. लाइक इफ यू आर सबमिटिंग रिसर्च प्रपोजल टुडे,
maybe after 6 months you will be invited for project presentation. So 6 month के बाद जब जाएंगे तो they are going to ask you, the experts are going to ask you the papers which were in press, paper which were submitted, paper which were accepted 6 months back, what is the status. आपने अगर exaggerate किया होगा तो you are going to be caught and you will be in trouble. So don't do any sort of exaggeration. At the end, this is general thought. Reviewers may not be expert in your field of research. जैसे कि मान लो आप, जैसे कि मैं फिजिक्स का हूँ, एक्सपर्ट भी फिजिक्स का है, बट लाइक मेरा जो रिसर्च टॉपिक है दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक, so he may not be having expertise in that specific area. So it would be my responsibility to make my proposal as easy as I can, so that any person can be it will be easier for any person to understand that. And moreover, before you submit proposal, give your proposal to read to your friend. So your friend may not be from your discipline. He could be from your discipline or he may not be from your discipline. And allow him, give him or her all sort of freedom to criticize, because whatever criticism you will be having before submission, it will help you to make fine tuning in your proposal. And that kind of fine tuned proposal, if you will be submitting, obviously the chances of getting that proposal is going to be very, very high. So now I'm going to stop here. I'm going to take a break. But before taking break, if you are having any questions, you can ask me. And then we will have a break for 15 minutes. And after 15 minutes, I will be telling you what kind of research and funding opportunities you will be having from various funding sources. अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं. Hello, sir. बोलिए मैडम. Sir, I want to ask something. Apart from your this lecture, no, sir, in your biodata, there is something mentioned H index and I-10 index. अच्छा, वो What is बताओ. that, sir? Okay. Yes, sir. अच्छा, because it was there in my presentation, but मुझे ऐसा लगा कि बहुत समय उसमें नहीं जाना चाहिए. Okay. H index means आजकल क्या है ना मैडम, nobody is going to ask you how many papers you have. वो Yes. लोग पूछेंगे कि एच H index क्या है. जैसे कि मान लो कोई एक बंदा है जिसके 100 पेपर है, बट H index is only 5. पेपर्स 100 है बट H index is 5. क्या मतलब हुआ उसका कि आउट ऑफ 100 वो बंदे के ओनली 5 पेपर गॉट ओनली 5 citations. 5 इंडेक्स है, मतलब although I have 100 paper, but I got my out of those 100, my 5 papers got only 5 citations. तो मान लो 30 अगर H इंडेक्स है, तो इसका मतलब आउट ऑफ दोज नंबर ऑफ पेपर्स 30 पेपर्स गॉट 30 citations मिनिमम. I-10 की बात ऐसी है कि आउट ऑफ योर पब्लिकेशन हाउ मेनी पेपर्स गॉट मिनिमम 10 citations. जैसे कि मेरा 121 I-10 है, तो इसका मतलब आउट ऑफ माय 222 स्कोपस पेपर, so 120 not scopus paper, because scopus में I-10 नहीं आता, scopus में only H index ही आता है. ये गूगल स्कॉलर पे I-10 आता है. तो गूगल स्कॉलर पे मेरे अराउंड 242 पेपर्स है. तो आउट ऑफ दोस 280 आई गेस, आउट ऑफ 280 121 पेपर्स गॉट मिनिमम 10 citations. उससे ज्यादा हो सकते बट कम से कम 10. उससे ज्यादा हो सकते बट 10 से कम नहीं. Yes, sir. Okay. Sir, I have a question. Suppose now I'm pursuing PhD and my PhD is going on, and if I want to give some research proposal and want to have some funding from the agency, so if I can relate directly my PhD topic, I can give as a research project proposal. Is it okay, or we have to be different with my PhD work? No, absolutely. Your research project need not be different from your PhD. Need not be. खाली इतना है कि आपके जो है रिसर्च पेपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने पहले भी बताया कि यू मे नॉट हैव PhD, बट बाय दैट टाइम यू हैव पब्लिश
like couple of research paper, right? So you are still pursuing your Yes. PhD, but you have good research credential, like 2-3 papers आपने publish किए हैं. So on the same topic you can go ahead and publish, submit research project. लेकिन दूसरी बात, ऑलरेडी जो रिजल्ट आपको मिले हैं, अगर इफ यू आर आस्किंग फॉर द सेम, देन अगेन यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. मतलब आपको आगे का टॉपिक देना पड़ेगा थोड़ा. मतलब जो ऑलरेडी आपने रिसर्च किया है, जो रिजल्ट आपको मिले हैं, पेपर पब्लिश्ड है, फिर से अगर उसी के ऊपर पैसा डिमांड करेंगे तो नहीं होगा. आपको तो उसका एक्सटेंशन में करना पड़ेगा. मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स आपने ऑलरेडी किए हैं उसको छोड़ते हुए आपको आगे का आपने जो काम करना बाकी है आपके पीएचडी के लिए, that can be a part of your research project. like जो हो चुका है, that should not be. Okay, sir. Means Yes. I have to change some future. मतलब आगे फ्यूचर में change, मुझे क्या करना चाहिए उसके हाँ, ऑब्जेक्टिव. मतलब I am not saying change. मतलब And आपको जो है whatever work आगे is not done जो, yet. हाँ, जो काम हुआ है वो नहीं प्रोजेक्ट कर सकते आप. जो नहीं हुआ है that can be, because that could be part of your PhD, but लेकिन किया नहीं तब तक आपने, वो that could be part of your research project. Okay. Yeah. Thank you. Any other question? Okay, अगर कुछ सवाल नहीं है तो then we will take a break for 15 minutes. Rather, what we will, yes, for 15-minute break लेंगे and then we will start. Is that okay? Yes, Okay, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay then. Okay, sir. Okay. Now it is 4:30. Okay, sir, okay. We will be back at 4:45. जी सर.
Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैडम शुरू करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, thank you. Yes, sir. Okay. I would like to welcome you again for the second session. Now I'm going to tell you what kind of funding and research opportunities you will be having. This is, I mean, as far as the funding opportunity is concerned, आप लोगों को पता है कि पिछले काफी सालों से हम जो टीचर है, सबसे पहले आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ अस वे डिपेंडेंट ऑन यूजीसी, राइट? लेकिन यूजीसी ने पिछले काफी सालों से पैसा देना बंद कर दिया। एंड द साइंस टीचर्स obviously UGC in addition to UGC ICSSR एक ऐसी एजेंसी है कि जो सोशल साइंस टीचर को काफी सपोर्ट करती है। एंड एज फार एज साइंस टीचर्स आर कंसर्न दे हैव मेनी ऑप्शंस रादर DST है, DBT है, DSI है, देयर आर मेनी ऑप्शंस। बट ब्रॉडली हम पहले ज्यादातर लोग यूजीसी को प्रोजेक्ट सबमिट किया करते थे, बट नाउ यूजीसी हैज स्टॉप फंडिंग। और आपको मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द एजेंसीज, अगर कोरोना के पहले और कोरोना के बाद अगर हम ये दो सिचुएशन को रिव्यू करें, तो अर्लियर वी यूज्ड टू गेट more funding for research project, but now after corona there has been substantial decline in the funding from like every funding agencies. दूसरा जो जो शिफ्ट जो आया है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द फंडिंग एजेंसी स्टॉप फंडिंग फॉर कन्वेंशनल प्रोजेक्ट। जो कन्वेंशनल जो प्रोजेक्ट हुआ करते थे उसको ऑलमोस्ट फंड देना बंद हो चुका है। डीएसटी कुछ हद तक, आईसीएसएसआर कुछ हद तक पैसा देती है, बट अपार्ट फ्रॉम डीएसटी, डीबीटी एंड आईसीएसएसआर, nobody is going to provide you funding for conventional project. So what then if they are not providing funding for conventional project, then what kind of project they are expecting? Let me tell you. Now what they are expecting is you, they are expecting multi collaborative project, more collaborative project rather than individual project. So they are expecting that the teachers from different faculty should discipline should come together, identify some societal issue, and see whether whatever credential or whatever research credibility they have, whether the collective research credential of those teachers from different discipline can be useful for resolving one or other societal issues. इस टाइप के अगर आपके प्रपोजल अगर है तो ही आजकल आपको फंडिंग मिलेगी, अदरवाइज लाइक इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने कहा कि देर आर मेनी फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द टीचर्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि सोशल साइंस के टीचर्स को पैसा मिल नहीं सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Now, in Department of Science and Technology, of course, the person from science and technology would be
considered as a principal investigator. But somehow, whenever I'm talking about the societal related research, तो बहुत बार ऐसा होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टीचर्स है, they will not be enough skillful to understand the needs of the society. They will not be enough skillful to understand how the research outcome can be utilized to address the societal issues. In that case, the teacher from social science discipline can join hands with the teachers from the science and technology discipline, and then collectively they can submit proposal. So in that way, these funding agencies are open for all the teachers. So if you are having this kind of approach, then there are plenty of options available. You can see now, you can see ये जो मैंने funding agency की list में बता रहा हूँ, like apart from UGC, there are many funding agencies. They are funding project for to the teachers. अब देखिए, this is another list. बहुत लंबी लिस्ट है. IMD है, ISRO है, MIT है, and there are many ministry also. They also provide substantial funding. Then there are international funding agencies as well. अगर आपके पास बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है रिसर्च का, and then if you are having good tie-up with the foreign collaborator, then obviously you can tap funding from international funding agencies as well. But जब भी हम international funding, this is the list. जब हम international funding agency की, this is in continuation with that. जब हम international funding agency की बात करते हैं, so obviously you need to have one or other collaborator from other country, and उनका जो expertise है, वो that expertise should be in complementary to your expertise. क्योंकि दोनों का अगर same expertise रहा, तो obviously that is not going to be useful. So you should keep, like, आपके पास अगर अच्छे publications है, तो you should keep on searching the collaborator from foreign agencies, foreign countries, and search for the options, and you can get funding from other funding agencies, like international funding agencies as well. Moreover, मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी फंडिंग एजेंसी का प्रोजेक्ट अगर चाहते हो, तो आपके पास अच्छे खासे पब्लिकेशंस होने चाहिए. अच्छे खासे doesn't mean that number could be 3-4, like even if you have 4-5 numbers research paper, but कहाँ पर वो पेपर पब्लिश्ड है. दैट इज वाई मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रेप्यूट जो है, वहां पर अगर आपका डेटा पब्लिश करते हो, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट प्रोजेक्ट. अदरवाइज आपके अगर सबस्टैंडर्ड जर्नल में पेपर अगर पब्लिश है, जैसे कि आपको पता है कि देर आर ह्यूज नंबर ऑफ सबस्टैंडर्ड जर्नल्स कमिंग अप, और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे टीचर्स वही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपना डेटा पब्लिश करने के लिए. जैसे कि यूजीसी ने कहा है कि पीयर रिव्यूड जर्नल में आपका होना चाहिए. तो पीयर रिव्यूड जर्नल तो इतने सारे हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं है. तो ऐसे जर्नल में आप डेटा पब्लिश करोगे तो पीएचडी तो आपको मिल सकती है, कैश में प्रमोशन तो हो सकता है, बट प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा आपको. प्रोजेक्ट मिलने के लिए आपके अच्छे जर्नल्स में पब्लिश पेपर बहुत जरूरी है. अदरवाइज am I connected? Yes, sir. Yes, sir. Oh, I thought I Yes, lost sir. it. Yes, Okay, sir. I thought I lost the connection. Okay. कहाँ गया फिर? Okay. Okay. Let us come to so now, because I told you the list of funding agency, now I will be telling you more details about those funding agency. जहां तक यूजीसी की बात है, हम सभी को पता है यूजीसी को अभी कन्वेंशनल प्रोजेक्ट यूजीसी ने ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं. There is no announcement as such from UGC, but very recently, मतलब recently भी नहीं कहूंगा मैं, पिछले 2-3 साल पहले, rather before corona, there was a scheme of transdisciplinary research for India's developing economy stride. ये UGC का स्कीम था. In fact, this was really good scheme. काफी colleges ने पैसा भी लिया है इसमें. So I never know. I don't know, in fact, like why UGC has stopped giving funding under this scheme. Truly speaking, it was really very, very good
scheme UGC has come up with. So hopefully in due course of time there would be there would be announcement from UGC. अगर मान लो UGC का announcement आता है तो you need to know about this. So I'm going to tell you more about this scheme, stride scheme. Under stride scheme, there are three different components: component 1, component 2, and component 3. Component 1 is for capacity building. Component 2 and 3 is transdisciplinary research. Component 1 में काफी colleges ने पहले phase में पैसा लिया है. You can get funding up to 3 years and maximum funding is up to 1 crore. ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च जो कंपोनेंट 2 का है, इसमें एक्सपेक्टेड ये है कि जैसे कि सेम इंस्टीट्यूट के एटलीस्ट कपल ऑफ टीचर्स, 2-3 टीचर्स शुड कम टुगेदर. दे शुड, जैसे मैंने पहले बताया, दे शुड आइडेंटिफाई वन और अदर सोसाइटल इश्यूज. अब किस टाइप के सोसाइटल इश्यूज होंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल, इट नीड नॉट बी सोसाइटल इश्यूज बट इम्पैक्टफुल होने चाहिए. जैसे कि आपको बताऊं, मान लो आप लाइक यू आर लिविंग इन area at which like you have a nearby places. You can identify like some villages in which farmers are struggling for proper yield of a particular crops, and you are from life sciences for example, and you have some idea to enhance or to enhance the cultivation capacity of that land, or to enhance the yield of particular crop. You have some altogether innovative ideas for that. So if you are having this kind of idea, you can go ahead and submit proposal to UGC under this scheme, under transdisciplinary research scheme. So here 2-3, and then you can ask as a societal, I mean the teacher from the sociology background or social science background can join with you. He will be provide you some added advantage. He will tell you how to reach the people, how to understand their problem, how to get yourself connected to the society. So he will be better person to tell you. So like that, you can add 1 or 2 teacher from social science discipline, 1 or 2 teachers from science discipline, and submit proposal. Under that scheme, under component 2, which is called as transdisciplinary research, you can get funding up to 1 crore and duration would be 3 years. As far as component 3 is concerned, this is high impact transdisciplinary research. यहाँ पर जो है, जो प्रोफेसर्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, सीनियर प्रोफेसर्स है, from the professors from different institutions, maybe 2 to 3 different institutions, they can come together and submit proposal. Motto वही होगा कि they will be identifying some issues of the society and then they will be providing one or other solutions. They like component 3 में काफी पैसा मिलता है, around up to 5 crore, and उसका duration भी काफी लंबा है. Now coming back to component 1, because this is like very good option for the college teachers in particular. आप देखिए, ये कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है. यहाँ पर जो है, जो कन्वेंशन प्रोजेक्ट पहले यूजीसी दिया करती थी, that kind of project you can ask your faculty members to prepare. A short-term project may not be for 2 years or 3 years. It could be a 1-year project, or it could be like a 6-month project, maybe like 5 lakhs, 10 lakhs. So you can identify the enthusiastic young faculty member from your college, maybe 5 to 10, and ask them to prepare a proposal. That could be one section of this capacity building. Another section could be like, our young faculty members and research scholars, they are struggling to understand the different aspect of research methodology. जैसे कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, हाइपोथेसिस कैसे लिखना है, साइंटिफिक आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, they are not aware of this. ये skills उनको पता नहीं है. So you can organize some workshop and you can get some money for training your young research scholars or faculty members for this. So for that purpose, you can get some money. Then sensitization of stakeholders about the various issues related to a societal or national importance. Stakeholders will include student,
and then parents, alumni, like you can address, you can decide like what is the location of your institution, वहां पर आपकी क्या प्रायोरिटी है, किस स्टेक होल्डर्स को आप मतलब टारगेट कर सकते हो, उनके सेंसिटाइजेशन के लिए कुछ पैसा आप डिमांड कर सकते हो. Then another subsection of this component one is entrepreneurship, promoting entrepreneurship. जैसे कि आपके पास कुछ young faculty है या research scholars है, they are having very good track record of doing laboratory research. उनका जो laboratory research है, it can be converted into product and उससे काफी पैसा उनको मिल सकता है. So, but they need a specific training. For that purpose, you can bring some money, you can ask some money. Then moreover, like हमारे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में पोस्ट डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कोई प्रावधान नहीं होता. यूजीसी के कुछ स्कीम्स है, दैट इज दोज स्कीम्स आर ओनली फॉर इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर. लेकिन इंस्टीट्यूशन के लिए कभी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए पैसा मिलता नहीं है. बट अंडर स्ट्राइड स्कीम यू कैन आस्क money for maybe 1 or 2 postdoctoral research scholar in your institute. And moreover, the last subsection of this scheme is if you really want to invite the scholar person or expert person, eminent person from the Institute of Eminence like CSR laboratory, DST, or any other research laboratory or central universities or Ts or like IITs, for that purpose you can have some money. And similarly, you can depute your teachers to those institutions for few months, and all expenses can be made under this scheme. So these are some of the provisions of component 1, and this is really good. There are many colleges, they got money under this. कंपोनेंट 2 मैंने बताया, ऑलरेडी बताया, तो फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. तो यहाँ पर अलग डिटेल्स तो अभी यहाँ पर है, बट आई हैव ऑलरेडी मेंशन अबाउट component 2 and component 3. Let us come to the other funding agency now. All India Council of Technical Education, AICTE. Predominantly, this particular agency support teachers from a technical background. Like जो engineering college के जो teachers है, उनके लिए ज़्यादातर ये funding provide करते हैं. They also provide, the conventional research projects. Conventional in the sense typical research projects and money for, they also provide money for modernization of laboratories as well. And then यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है. मान लो आपके पास कुछ फैकल्टी मेंबर है, उन्होंने लेबोरेटरी रिसर्च किया हुआ है. अब some technology they have developed, but that technology need to be patented. Some capacity building के लिए भी आपको पैसा मिलता है. And then if you are having any innovative idea, but you need to check whether that idea is going to be click or not. For that purpose, that is called a proof of concept work. That also, for that purpose also, you can get funding from AICTE. But obviously, this funding goes to the teachers from engineering college. But as I mentioned earlier, you can tie up with those teachers and you can submit the collaborative proposals. Next come Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. CSIR भी mainly जैसे मैंने बताया है कि mainly this funding agency also entertains the teachers from science and technology background. But फिर से मैं बताऊंगा कि social science teacher also can join, and obviously whatever the project thrust you are going to have during your project, that need to be aligned with one or other societal issues. अब सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि ये फंडिंग एजेंसी का, किसी भी फंडिंग एजेंसी की बात करूं, whenever you will be submitting proposal to any funding agency, you need to make it sure that you are targeting thrust areas of those funding agency. किसी भी फंडिंग एजेंसी के अपने प्रायोरिटीज होते हैं, एंड ओपन एंडेड नहीं होते. ओपन एंडेड DST में थोड़ा सा ओपन एंडेडनेस है, but like CSR is also very specific. Nowadays they are expecting that the teacher who want money from CSIR, nowadays they are expecting that you should have tie-up with any one of the CSIR laboratories, because there are many CSIR laboratories across the country. So they are expecting that you should have
collaboration with the scientists from CSR laboratory. Earlier वो दिया करते थे, but now they are like more or less they are expecting collaborative proposal, and they, because every CSR lab they have a very specific the targeted areas. So if you could align with their research and submit proposal in collaboration with them, then it will be easier for you to get the funding. So यहाँ पर वैसे तो वो बताते हैं कि कन्वेंशनल रिसर्च स्कीम है जो आप इंडिविजुअल सबमिट कर सकते हो. स्पॉन्सर स्कीम जो है वो लाइक यू नीड टू सबमिट अलोंग विद द रिसर्चर और साइंटिस्ट फ्रॉम द CSR लेबोरेटरी. बट आजकल उन्होंने ऑलमोस्ट इंडिविजुअल रिसर्च स्कीम देना, प्रोजेक्ट देना बंद कर दिया है. They also used to provide like support emeritus scientist scheme even for university teachers. लेकिन आजकल वो भी काफी substantially कम हुआ है. But they have these schemes available. Then we have many DRDO laboratories in the country, and they provide very good DRDO organization as a whole. They provide good funding, but they are very specific. DRDOs are very specific. Let me tell you, the whatever DRDO laboratories we have across the country, each laboratory has its own mission. जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी उनके टारगेटेड एरियाज होते हैं, अपने हर लेबोरेटरी का अपना एक मिशन है. तो दे आर व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज इफ यू आर फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी, you should have collaboration with one of the DRDO laboratories, with I mean the scientist of one of the DRDO laboratories, and then you should align your research with the research happening in DRDO laboratory, and then submit joint proposal. तो ही आपको पैसा मिल सकता है. ऑफकोर्स उनके टारगेटेड एरियाज हैं, वो टारगेटेड एरिया के बाहर आप नहीं जा सकते, बट यू हैव टू बी अलाइन विद देम. सिमिलरली वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. यहाँ पर भी वैसे ही है. They do provide R&D, I mean support for R&D project, organization of the conferences. They also provide funding for young scientists. Research associateship भी देते हैं. But when it comes to the R&D project, young scientists को तो भी individual project मिल सकता है. But whenever we are talking about R&D project, again they are expecting that you should have collaboration with any one of the DAE laboratory in the country, and then they will be principal collaborator, and then you can submit proposal and have funding from them. DBT is another funding agency, Department of Biotechnology. DBT and DST is a kind of very generic funding agency. यहाँ पर इनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता, थोड़ा सा ब्रॉड अम्ब्रेला टाइप इनका फोकस रहेगा एज कम्पेयर टू DRDO एंड अदर CSR लेबोरेटरीज, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल साइंसेस रिलेटेड रिसर्च जो है दैट कम्स अंडर DBT. बट अगेन मैं बताऊं कि it doesn't mean that only the teacher from biological sciences can submit proposal. Anybody can submit proposal, irrespective of your background. If you are focusing their target area, and if you have your credential, forget about what degree you have, but you have some credibility, you have some published paper in that area. Like for example, I am from physics background, but see, if I'm having say the research paper published in biosciences, and if I'm looking forward to extend the existing research, obviously DBT is going to be a wonderful platform to get good amount of funding. They don't have limitation as such. You can, these are some of the schemes they have, but you need to see like because ये जो data मैंने लिया है, but whenever you will be submitting proposal, you need to get updated data from funding agency website and see what are their priority areas. Apart from those, like this is a Department of Coal. This is like from Ministry of Coal. ये जो Department of Coal है, it comes under Ministry of Coal. ये बहुत ही स्पेसिफिक फंडिंग टॉपिक पे फंडिंग देते हैं, लाइक प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी, कोल बेनिफिशिएशन, कोल यूटिलाइजेशन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. दीज आर सम ऑफ द एरियाज दे आर लुकिंग फॉर. आप अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं एंड क्रेडेंशियल भी है जो उनके टारगेट एरिया को एड्रेस आप कर सकते हो, देन यू विल बी एबल टू गेट फंडिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कोल. वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट से भी ओशन
like जितने भी ocean development, like for these are the areas like marine geology है, geophysics है, marine coastal ecology, marine biology. These are some of the areas in which they provide funding. ये these are very specific funding agencies. ये ऐसा DBT और DST जैसे नहीं है. DST जैसे मैंने बताया कि DST is very broad spectrum. They have many funding scheme like DST core research grant, पहले उसको EMR कहते थे. DST टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप है. DST सीड, this is for इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट. DST नानो मिशन है. DST ये DST सीड में आपको लाइक यहाँ पर there are many schemes. One scheme is like they provide funding for the teachers from SC/ST category, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. And they also provide funding for addressing like you can adopt some villages. जैसे कि हमें कोरोना के पहले एक प्रोजेक्ट मिला था. कॉस्ट वाज अराउंड 2.6 करोड़. We adopted 5 districts from Kannad Taluka, and we were from 3 different departments. We identified some issues like यहाँ पर expected ये होता है कि you should identify the villages in which the SC/ST population is more in number. They I mean if they are struggling for their livelihood, मतलब उनके पास उनके अर्निंग सोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है. So you can plan some courses or some technical enhancement courses so that their technical abilities could be enhanced, and then the employment could be provided at local level, or entrepreneurship could be developed in such a way that the livelihood can be increased. So if you are having this kind of ideas, they don't have extreme limit as such. Plenty of money available with them, and you can submit proposal under this category. DST Nanomission is another which deals with the nanoscience and technology. There are many other schemes. I'm going to discuss that in next few slides. Then DSIR is another scheme wherein you can have like it's just like a CSIR, similar to CSR in the same line. DSI, Department of Scientific and Industrial Research Work, they have their focus areas. ICMR is another funding agency. This is specifically Indian, meant for the medical science research, but it doesn't mean that you should be from medical science. They have the research focus, and if you could target that research focus, then you can get funding from ICMR as well. Then this is India Meteorological Department. So if you are having ideas and credential related to the meteorology, then obviously you can get funding from IMD as well. These are very focused funding agencies. ISRO is again very broad funding. I mean, very you can get huge funding from ISRO. Like ISRO is one of the leading space institute across the globe. We have got, they have different wings operational. They have different mission going on. आपने चंद्रयान mission, there were a couple of Chandrayaan mission. So like whenever we are talking about mission, it doesn't mean that only ISRO scientists working in those missions. They keep it open, like any university teacher or any college teacher can contribute. So what you need to do is, in fact, like one of the beauty of ISRO funding is they don't have any deadline as such. They are open throughout the year. What they have done is they have identified different centers related to the different thrust areas, like space science. If you are having any the space science related, because the space science related, atmospheric science related, if you are having any remote sensing related project, these are the corresponding centers. So like whenever you are having any project ideas related to specific targeted areas, you are advised to visit this particular center,
have interaction with the scientists, see what kind of mission they are working on, and then see like what kind of research skills you have, so that you can get yourself aligned with their mission, and you will be able to contribute. Need not be substantially, but maybe even if to a smaller extent, still you can go ahead and make a mention, and they will be able to provide you a funding for doing that work back to your institution, which is going to be useful for their mission. So there are many teachers I have seen, they have got ISRO project from colleges too. It's not only for university, but colleges too. So this is really good funding agency. Then we have Ministry of Electronics and Information Technology. Again, like this is very broad funding agency here, because whatever software related research you want to do, whatever product development research you want to do, even like you can develop the software for addressing some issues, minimizing some problems in the society. You can develop some devices to which is going to be useful for like farmers, for example. Like you can get good amount of funding from Ministry of Electronics and Information Technology. So like that, there are many ministries like Ministry of Environment and Forest. Obviously, whenever we are talking about the ministry, they are going to be very very focused. जैसे मैंने पहले बताया कि डीबीटी और डीएसटी ये दो फंडिंग एजेंसीज हैं कि जो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेकर चलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द मिनिस्ट्री, दे आर गोइंग टू हैव वेरी फोकस ऑब्जेक्टिव्स. तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, so if you are having any idea related expertise and idea related to environment and forest, obviously you can go ahead and submit proposal, and you can get huge funding. They don't have any limitation as such. Like you can get more than crore also. There are people who got funding from these funding agencies, which is costing more than 1 crore. Similarly, Minister of Food Processing Industries, मान लो आपके पास कोई विलेज है जहां पर आप ऐसे एरिया पे वर्क करते हो जिसके इर्द गिर्द जो है कुछ, मान लो कुछ फार्मर्स है. I would request coordinator to ask the participants to mute their mic. Okay, thank you very much. So there are like for example, you are working in the place, some institution where you have a nearby villages to your institution, wherein those they have a good yield of some crops. However, although they have a huge production of or yield of that crop, somehow like they are not able to encash the proper return from that crop, because as they are not linked up with the commercial hubs. As a result of that, somehow whatever money they are investing, somehow they are not able to earn money, substantial money out of that. But if you are having some ideas, like for example, developing some products, some instruments, so that whatever crops they are having, from at their end only, there are different food products uh, can be uh, uh, can be produced and can be sell at their respective places. So if you are having that kind of ideas, obviously the Minister of Food Processing Industry can provide substantial funding. Then we have a Ministry of Non-Conventional Energy Sources. Any ideas related to like renewable energies? Because nowadays non-conventional energies are going to play very important role in coming days. So if you are having like like in India, we have out of 12 months, almost like 7 to 8 months, we have very hot summer, apart from May, June, July, April, May, June. But like throughout the year, around 7 to 8 months we are going to have very good, very bright sun. So like as a result of that, the solar energy is going to be like one of the prominent areas in which we can focus on. So different technologies are coming up. If you are having expertise in this area, this Ministry of Non-Conventional Energy sources are going to provide you wonderful
funding. Then we have a Ministry of, like, in the same track, we have Ministry of Power, Central Power Research Institute, the Ministry of Water Resources. If you are having any ideas related to water conservation, water management, and like related ideas, like you can have funding from funding agencies as well. So like that, we have a Department of Education, Science and Technology Application for Rural Development, Science and Technology for Rural Sections, Indian National Science Academy. Like INSA is again very good funding agency. They provide many fellowships to the university and college teacher as well. So like that, I mean, I have already mentioned there are many international funding agencies as well. These are contact details. I am going to share the PDF version of my PPT to the HRDC center, so that they can provide you copy of this PDF, so that you can get details of this funding agency. But if you type in Google these name of this funding agency, you are going to get updated details. So this is all about the different funding agencies. Now I'm going to tell you what kind of openings you have as of now, because there are many schemes available, even open, and some schemes are not open as of now, but they will be open like in due course of time. So I thought like I should give you a glimpse of that. This is a scheme from ICSSR. They are inviting applications from Indian research institutes, centers, and departments for empirical research studies under the scheme or research program. So, like this scheme is still open. This is open for any research institute, not only research institute, any research institute or affiliated colleges or universities, state universities or central universities. This research program can be for maximum 2 years, and you can get the funding up to 70 lakhs. So under this research program scheme, uh, you can have the both aspect covered, like capacity building and fundamental research. So both aspect can be covered. You can, as I mentioned earlier, in the stride scheme, there also you can do the same thing. You can have you can write a small projects. You can ask your faculty member to write a short-term projects, and that could be a part of this scheme. Similarly, you can spare some money for capacity building as well. This scheme is still open. But this is not an individual research scheme. I mean, 2-3 research scholar from one department, or a different research scholar from different department can come together and propose a research program. And last date is still open. Tomorrow is going to be last date for this. This is ICSSR different fellowships. Now these fellowships are not open as of now, but like once in a year they keep the announcement of this on ICSSR website. So if you are from social science discipline, I would advise you to keep on visiting ICSSR website, so that you can come across this. You can see like senior fellowship. Senior fellowship is for the teachers or scientists at the age group of 45 to 70 years. Like even after your superannuation, you can get a fellowship under this particular category. Then you have a postdoctoral fellowship, those who are having PhD, but somehow they don't get permanent employment, because nowadays there are many students have PhDs, but like they don't have permanent employment. So for them, postdoctoral fellowship could be a very good option. Similarly, they do have a doctoral fellowship option as well. जैसे मैंने बताया कि पहले PhD student को fellowship almost नहीं के बराबर थी. But nowadays in Maharashtra, particularly, I don't know what the situation in other country, other state, but in Maharashtra, every student is going to get one or other fellowship. Like we have got Bharti, Sarthi, Mahajyoti. There are many schemes. Like all the PhD students are going to get fellowship during their PhD. But SCSR also can provide funding for doing PhD.
जनरली जो है अप्रैल टू जून में अनाउंसमेंट आता है ज्यादातर. नाउ दिस इज फेब्रुअरी, तो मोस्ट लाइकली announcement of this fellowship is going to come in 1 or 2 months. So if you are interested, you can just keep on visiting ICSSR website. Then this is the call. This is this is, yes, still it is open. February last date is 15th of February. This is consolidation of university research for innovation excellence. This is open for women PG colleges. This is exclusively for women PG colleges in science and technology. Funding जो है जो women college PG colleges है उसमें again like you can do you can ask money for establishing some state of the art facilities for uh, promoting research in your institutions, and you can ask money for some capacity building as well. Now, as far as the funding opportunities in DST SCRB is concerned, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि SCRB DST जो है यहाँ पर काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सभी लोगों के लिए यहाँ पर फंडिंग होगी. जैसे मैंने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग तो हो गए ही, बट लाइक सोशल साइंस पीपल आल्सो कैन get aligned with the science people, and then they can join in hand with them, and you can get different funding agency in different scheme. These are some of the schemes. इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं, जैसे कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हाई प्रायोरिटीज एरियाज. आप अगर देखेंगे, दिस स्कीम इज designed to provide a major support to a few selected areas of research that have high priority from the viewpoint of advances in fundamental science. देखिए कि जैसा कि कुछ एरियाज जो है प्रायोरिटी एरियाज है फंडामेंटल साइंस के, आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं जो कि उसका जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू, उसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है. वो आइडियाज फंडामेंटल साइंस से रिसर्च होगा, बट रादर आगे चलकर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए वो काफी यूजफुल हो सकता है. प्रायोरिटीज एरियाज अगर ऐसा है तो यू कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग, बिकॉज दिस इज वेरी स्पेसिफिक, दिस इज नॉट जनरलाइज. देयर आर सम जनरलाइज स्कीम लाइक कोर रिसर्च ग्रांट. दिस इज वेरी जनरलाइज, वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसका होगा. मतलब किसी भी यहाँ पर कोई ज्यादा फोकस नहीं होगा. अब किसी भी डिसिप्लिन के लोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं. अर्लियर इसको एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च कहाँ करते थे, EMR. नाउ इट इज बीइंग रीनेम एज ए कोर रिसर्च ग्रांट. यहाँ पर फंडिंग लिमिटेशन नहीं है, कैन गो बियॉन्ड like 1 crore as well. Then for young faculty member, there is a startup research grant scheme from DST. जैसे कि मान लो कुछ रिसर्च स्कॉलर है, जैसे कि टीचर्स है, they got PhD from very good institution, they have very good track record of publications, and they like got a job in some remote area, या तो ऐसे जगह पे है जहाँ पर उनके पास कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. So this is the scheme, like you can ask some funding from the DST. You will get some basic like up to 30 lakhs, and then some contingency grants, some consumables for 2 years, so that you can build on that and provide some opportunities for student, get your team build, and so that you can submit later on proposal under core research grant. Then this is Supra scheme, scientific and useful profound research advancement. This scheme is beyond normal core research grant and purposefully designed for high quality proposal consisting new hypothesis or challenges or challenge existing ones and provide out of box solution. मान लो जो existing कुछ ideas है, you are challenging that. प्रूहन एक theorem है and you have some idea to challenge that. You have some out of box idea. So Supra is the scheme wherein you can get funding for quick research, and because it is going to be very fast, like you just go ahead, submit proposal, and then very quickly you can get funding from that. This is the scheme which I was talking earlier, empowerment and equity opportunities for excellence in science. This scheme is open only for
teachers from SC, ST category. The teachers can get funding up to 50 lakhs. This is similar to core research grant. Objectives by and large same ही है, but only limited to 50 lakhs and limited to the teachers from SC, ST category. Then this is a mathematical research impact centric support matrix. This is for theoretical sciences including social sciences. मान लो आप social science के हो and you have some idea that you have some statistical method and which can be used to address some societal issues, but you want to buy that software, and then you will be able to do very good impactful research. But of course, जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता नहीं, very limited amount is there, but still it is available. Then this is impacting research, innovation, and technology imprint 2. यहाँ पर this is also very specific technology development scheme DST ने रखे हैं. उन्होंने list दी है. There are 20 almost specific technology development themes. आपको अगर उस theme के अंदर you have idea so that you want to develop some technology, right? So for that purpose, you can get funding under these schemes. Apart from the conventional research grant, like you can get funding for attending international conference. If you are a young researcher, then you can get funding for registration fees as well as to and fro air tickets. For senior researcher, more like above 35 years of age, they can get only travel support, not support for registration. Obviously, you can get funding for organizing seminars and symposia from DST. This is SERB Power Grant. This is exclusively for women scientists. Like there are two schemes, in fact, SERB Power Research Grant and SERB Power Research Fellowship. So this Power Research grant is for working women, and SERB Power Fellowship is for unemployed women. Like if they have got PhDs, but so far they didn't get opportunity to work in one or other institution. This is going to be a wonderful scheme available for women scientists. This is SERB Assure Grant, State University Research Excellence. This grant is not only open, this is for specifically state university, including private universities and affiliated colleges. Although they have mentioned state universities, but यहाँ पर आप देखेंगे कि affiliated colleges जो है and private universities को भी ये पैसा इसमें मिलता है. This is because we know like central university get a lot of funding from central government. So we state university people and college people have a lot of issues as far as the funding is concerned. So this could be a wonderful scheme available for the teachers from those colleges, including university, including engineering as well as science colleges. This is another scheme, Fund for Industrial Research Management. Through this scheme, industry academia programs, the government and other industry partners create a pool for funding, resources and network that would enable strong research project with breakthrough impact on some of the major issues of the country. मान लो ये idea ऐसी है कि let us say like you are very genuine researcher and you have got already collaboration with industry. So your expertise and the expertise of that industry can come together and address some societal issues. If you are having that kind of idea with you and you have industry partner, then you can get funding like for both, like funding for a research institute like your college as well as to that industry. Apart from that, this is a scheme of visiting scholar under cultural exchange program from ICSSR. Now, this kind of scheme is not only for ICSSR, this kind of scheme is also available to DST. Now, the idea is here, like ICSSR and DST has tie-up MOU with most of the universities, most of the developing and developed countries. Like, for example, Indo-South Korea, Indo-Japan, Indo-US, like these kind of schemes are there for
both social science teacher as well as science teacher. For social science, you will get the advertisement at ICSR website. For science teacher, you can see the advertisement at DST SARB website. Now here, what is the idea? Idea is like whenever, of course, these schemes are not open throughout the year. ये कभी कभार आप वेबसाइट पे देखेंगे, whenever this announcement is going to be there, you are going to get around 1 month for submission of proposal. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि let us say you have a very good collaborator in Japan. So what you can do is you can start drafting. First of all, तो आप ऐसा करिए कि you start, if you don't have any foreign collaborator, you keep on searching, identify 1 or 2 collaborators from different countries, start talking about your research ideas with him, generate proposal, and keep your proposal ready. Okay, and whenever this kind of announcement is going to be there, you can submit proposal to your ICSS or DST, and your counter part will submit proposal to their organization in their respective country. Under this, you can visit that country for 1 month, 2 month, 3 month, up to 6 month. All your expenses are going to be covered. Similarly, the professor or scientist from other country can also visit India. So that kind of facilities are available under this scheme. Now, this is one of the fellowship from one of the European countries, Slovak Republic. There is a the fellowship for this fellowship is open for master student, PhD student, postdoc, and university teachers. Under this scheme, you can visit Slovak Republic for from 1 month to 10 months, and you can get good amount of fellowship under this. There are 2 different, but provided you should have invitation from any one of the universities from Slovak Republic, which is one of the country of Europe. And there are 2 different openings. Like one is in October and another is in April. So now April is coming. On 1st of April, it is going to be open, and 30th of April is going to be closed. But before that, you should have invitation from any one of the universities of Slovak Republic. Recently, I went on this fellowship for 10 months. Last year, I was in Communist University, Bratislava at Slovak Republic. This is a national postdoctoral fellowship. At present, it is not open, but like those who have PhDs and somehow not able to get permanent job, then this national postdoc fellowship is going to be good option. You can get fellowship for 5 years, and good. I mean, around 50 to 55,000 fellowship you can get under this national postdoctoral fellowship. We have got ACRB overseas postdoctoral fellowship. There are 2 different kind of overseas postdoctoral fellowship. One is for US, another is for rest of the country. And here you can visit US or the respective country up to 1 year. It's like from 3 months to 1 year, and your to and fro expenses will be covered, and you are going to get around 3,000 USD per month for your expenses in US or respective country. This is teacher associateship for research excellence. This is from there are the teacher associateship, this kind of facilities. This is like a kind of mobility for the faculty members. Like if you are from the affiliated college or state university and want to visit IITs or TEs or ISER or TFR for a couple of months or 2-3 months during your summer vacation, this could be a wonderful fellowship. This is from DST SCRB, as well as similar fellowship is available from INSA as well. Your to and fro expenses and expenses during your mobility period also can be covered under this. This is Fulbright Nehru Fellowship for US, specifically for US. This is for there are different schemes available. Master student can go up to 2 years. Doctor student, PhD student can visit US for 6 to 9 months. Teachers can visit for 4 to 6 months. Postdoctoral researcher can visit from 8 to 24 a month, and even it is applicable for
administrator as well. But this is specifically for US, but you should have invitation from that. These are some of the deadlines, last year deadlines. Now you see, most of the time opening is going to be in the month of May. So if you are interested for 24, for 25-26 year, for 25-26 academic year, the deadline would be May to 2024. So if you are interested in this, you just have a collaborator invitation from US and keep yourself ready for submission of proposal under this scheme. Apart from that, you have a different fellowship like Humboldt Fellowship, International Fellowship. This is for Germany, JSPS International Fellowship for Japan, Australian Fellowship, of course for Australia, Commonwealth Fellowship for UK, and as I mentioned earlier, there are many bilateral programs of Indian universities with overseas universities. However, if you really want to tap all those fellowships, you should have, because you see, if you are fresh PhD and if you have good publication like around 3 to 4 publication in Q1 research journal, obviously you have a lot of opportunities in US universities, European universities, Asian universities. Similarly, if you are the teacher having around like 10 research paper published in Q1 research journal, not need not be only Q1, like even Q2, but Scopus Index Research Journal, then obviously there are plenty of visiting research fellowships. Apart from these visiting research fellowship, every professors of most of the overseas university has funding. If you start sending them email and interacting with them, you are bound to get invitation from one or other professor. They will be inviting, he or she will be inviting you for couple of months. You can get to and fro your ticket and local expenses there. Go there, spend your time, get exposed to the university, overseas university environment, get yourself enriched and come back to India, create submit proposal for the fundings and create good infrastructure. This is again very recent announcement from IIT Hyderabad. This is for the science and technology student. Those who are PhD having very good track record, they can get postdoc fellowship up to 2 years, and you can see the amount, monthly amount is going to be around 75,000 rupees per month. Very attractive fellowship. So in summary, plenty of opportunities are available across the globe. जैसे कि आप यंग रिसर्चर हो, आपके पास, provided you should have good publications. Without publications, quality publication, nobody is going to entertain you. But let me tell you, if you are PhD holder with 3 to 4 Q1 research paper, I'm sure you are going to get many invitations from overseas university. If you are a teacher having around 10 research, 5 to 10 research paper in good research journal, maybe Q1 or Q2, you are bound to get a visiting a research fellowship in one or other country. You can go there for 1 year, 6 months, 5 months, 6 months, whatever, like depending on your availability. So as I mentioned earlier, encash these opportunities, do very constructive and very genuine research in India, publish data in good research paper, create your foundation, create your biodata, and search for the opportunities. You are going to get this opportunity, visit those universities in overseas country, get yourself exposed, learn many skills, come back to India, and then you can submit proposal to many funding agency, create infrastructure again here, provide fellowship to your student, and then later on you can promote your student visiting overseas country. So I mean, the as I mentioned earlier, plenty of opportunities are available, but you need to have a very innovative and proactive approaches to tap those opportunities. Otherwise, you're not going to get those opportunities. With this, I'm going to stop here now, and I will keep this session open for the questions now. Thank you, sir. Thank you. Yes. Thank you, sir. You are most welcome. Now is a question and answer session, please. Anybody have any queries? Please. Hello.
Anybody want to ask some questions to sir? हॅलो. Okay, I consider. हॅलो. Hello, yes. मॅडम एक प्रश्न आहे सरांना. सर जे प्राध्यापक अगोदर तुम्ही म्हटलं की युजीसीनं फंडिंग बंद केलेली आहे. मेजर प्रोजेक्ट वगैरे अगोदर व्हायचे ना. हो हो हो. तर ते त्याच्या पाठीमागची नेमकी कारण काय आहेत बाबा सर? कारण काहीच नाही दादा, आपल्याला माहित नाही. कारण तुम्हाला माहित असेल 2014 पासून एक एक चर्चा होती पूर्ण भारतामध्ये की युजीसी बंद होऊन HRD आपल्या MHRD मध्ये मर्ज होणार आहे, राईट. तर त्यामुळे असं वाटलं की हे बंद करायचं म्हणून त्यांनी फंडिंग बंद केली. पण नंतर ते डिसअपिअर झाले, ते रुमर्स सर्व डिसअपिअर झालेत. मध्येच त्यांनी करोनाच्या अगोदर ते स्ट्राईड स्कीम, तुम्हाला मी सांगते, स्ट्राईड स्कीम सुरू केली होती. ती त्यांनी एखादं वर्ष चालवले, ते सुद्धा बंद केलंय. आता त्यांच्यामध्ये काय काय चालू आहे काही कळायला मार्ग नाही. खरं म्हणजे त्यांनी हे जे प्रोजेक्ट पूर्वी जे द्यायचे टीचर्स ना, ते ओपन करायला हवे. पण अनफॉर्च्युनेटली नाही होत. कारण काही आयडिया नाही काय असतील ते. सर मला पण बंद करून टाकलं सर त्यांनी. काही कारण माहित आहेत, पण आता या प्लॅटफॉर्मवर बोलता येत नाहीत. जे कारण आहेत ते या ओपन प्लॅटफॉर्मवर बोलता येत नाहीत. असं ठीक आहे. पण सर दुसरा असा प्रश्न आहे, महिला संशोधनासाठी काही स्पेशल फेलोशिप आहेत का? आहेत. मी तेच तुम्हाला सांगितलंय ना. महिला संशोधनासाठी बघा, युजीसीच्या बद्दल पूर्वी जसं मी तुम्हाला DST SARB पॉवर फेलोशिप जे सांगितलंय ते DSTचे आहे. जिथे वर्किंग वुमेन्ससाठी रिसर्च प्रोजेक्ट्स आहेत, अनएम्प्लॉईड वुमेन्ससाठी फेलोशिप्स आहेत. तशीच फेलोशिप युजीसीची सुद्धा होती अगोदर. पण आता युजीसीने ऑलमोस्ट सर्व बंद केल्यामुळे ते ऍडव्हर्टाइजमेंट आता कधी येईल माहित नाही. पण स्कीम्स आहेत. आणि SARBची तुम्हाला कंटिन्यू जर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड जर महिला असतील तर त्यांनी SARBची वेबसाईट सतत व्हिजिट करत राहावं. त्या वन्स इन अ इयर त्या स्कीम्स ओपन होतात. अच्छा. नाही ग्रंथालय शास्त्राचे समजा महिला असतील तर त्यांच्यासाठी स्पेशल काही युजीसी साठी आहे. युजीसी ग्रंथालय म्हणजे युजीसी कडे जावं लागेल. किंवा मग ICSSRच्या स्पेशल वुमेन्ससाठी नाही आहेत ICSSRच्या, बट दे आर ओपन फॉर एव्हरीबडी. ICSSRच्या काही स्कीम आहेत. अच्छा. येस. ओके सर, थँक्यू. सर सर, आय मला वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन. जर वर्किंग असतील, परमनंट वुमन फॅकल्टी आहे वर्किंग मध्ये, आणि जर त्यांना PhD साठी काही फंडिंग हवं असेल तर अशा काही स्कीम्स आहेत का किंवा फेलोशिप्स आहेत का फॉर वर्किंग फुल टाइम फॅकल्टी? नाही, तेच सांगतो ना, रिसर्च फंडिंग SARB पॉवर जे. तुमचा विषय कुठला आहे मॅडम? फिजिक्स सब्जेक्ट कुठला? हा, फिजिक्स जर असेल तर SARBची पॉवर फेलोशिप जी आहे, तुम्ही वर्किंग रिसर्च ग्रँट त्यासाठीच आहेत ना, वर्किंग वुमेन्ससाठीच आहेत. परंतु जेव्हा आपण रिसर्च ग्रँट म्हणतोय, चला खाली उतरू, 100% ते सांगत आहे. अरे थांबा. बोराडे सर, म्यूट करा तुमचा, अनम्यूट करा. तर जेव्हा आपण रिसर्च ग्रँट म्हणतो तेव्हा तुम्हाला तुमच्याकडे काहीतरी क्रेडेन्शियल पाहिजे. म्हणजे पब्लिकेशन शिवाय तुम्हाला पैसा मिळणार नाही. म्हणजे सर PhD कम्प्लीट नाहीये आणि वर्किंग पण फुल टाइम मध्ये आहे, तर अशा लोकांनाही त्या सर पॉवरची जी आहे ती ऍप्लिकेबल मिळू शकते. येस मिळू शकतं. ओके. फेलोशिप नाही, रिसर्च ग्रँट आहे ती. फेलोशिप दोन स्कीम आहे तिथं. रिसर्च फेलोशिप जी आहे ती अनएम्प्लॉईड वुमेन्ससाठी आहेत, आणि रिसर्च ग्रँट जे आहेत ते एम्प्लॉईड साठी आहेत. पूर्वी तसंच एक युजीसीची सुद्धा फेलोशिप होती. युजीसीची एक अशी फेलोशिप होती पूर्वी, आता ते दिसत नाही खरं म्हणजे, की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही औरंगाबादला काम करतायत, राईट, आणि तुमचे मिस्टर कोल्हापूरला कुठेतरी आहेत, राईट, आणि तुम्हाला काही कारणामुळे औरंगाबादला राहणं जरा कठीण चाललंय. तर तुम्हाला 3 ते 4 वर्ष तिथं डेप्युटेशन मिळायचं. अशी जी स्कीम होती, म्हणजे एम्प्लॉईड वुमेन्ससाठी. पण ती स्कीम आता दिसत नाही युजीसीच्या वेबसाईटला कधी. ओके म्हणजे सर. आणि वर्किंग वुमन्सला लेडीजसाठी कम्फर्टेबल, म्हणजे काही कारणामुळे जेव्हा एकत्र राहता येत नाही, काही कारणामुळे, परंतु तुम्हाला आवश्यक आहे एकत्र राहणं, अशा वेळेस ती स्कीम अशा महिलांसाठी ती स्पेसिफिकली स्कीम होती ती.
पण ती स्कीम सध्या दिसत नाही. काय म्हटलं मॅडम, तुम्ही काहीतरी बोललात? सर वुमन सायंटिस्टची जी फेलोशिप असायची तर ती फेलोशिप वर्किंग वुमन्सला आहे का करिअर गॅप वगैरे काही हवा आहे का कंपल्सरी त्याच्यामध्ये? नाही, ऍब्सोल्युटली काही नाही. वर्क वुमन साठी आहे ती. आणि सर एक प्रश्न असा होता, सध्या आपल्या विद्यापीठातून काही नॉमिनल फंडिंग वगैरे असं काही आहे का रिसर्च प्रोजेक्ट हो, साठी आपल्या वगैरे? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये पूर्वी काय असायचं, अनअसाइन ग्रँट्स असायच्या युजीसीच्या. त्यामुळे हे फार फ्रिक्वेंट मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट कॉलेजच्या प्राध्यापकांना विद्यापीठ द्यायचं. परंतु आता काय झालं की युजीसीच्या तशा अनअसाइन ग्रँट नाही आहेत, परंतु काही स्कीम्स आहेत ज्या माध्यमातून आपण कॉलेजेसच्या काही प्राध्यापकांना मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट देतोय. मागच्या वर्षी दिले होते. दरवर्षी अशी अनाउन्समेंट येईल. आता यावर्षी सुद्धा येईल काही दिवसामध्ये. ओके सर, ओके, थँक्यू. येस Sir, can I ask you? येस प्लीज गो अहेड. सर, काही युनिव्हर्सिटीजचे PhDचे रिसर्च थिसिस इन्फ्लिपनेट वरती असतात. मग तसं आहे त्याप्रमाणे जर काही टीचर्स जसे युनिव्हर्सिटीचे टीचर्स आहेत, प्रोफेसर्स आहेत, त्यांनी जर मेजर मायनर रिसर्च केले तर ते पण असं ओपन रेफरन्स साठी का नाही ठेवले जात? हा, की ठेवले ठेवायला जातात पाहिजे. ते आम्हाला माहिती नाही. आता काय होतं माहितीये का, काय होतंय की इवन आपण जो पीएचडी रिसर्च करतो तो सुद्धा प्रत्येक विद्यापीठाचा नियम आहे की त्याची सॉफ्ट कॉपी तुम्हाला लायब्ररीमध्ये द्यावं लागते आणि विद्यापीठाच्या लायब्ररीने ती ऑनलाईन ठेवणं अपेक्षित आहे. तर काही ठिकाणी ह्या गोष्टी होतात, काही ठिकाणी होत नाही, ऍज फार एज रिसर्च थेसिस सारखं, पीएचडी थेसिस सारखं कन्सर्न. परंतु प्रोजेक्टच्या संदर्भामध्ये तसं कुठलेही गाईडलाईन्स किंवा तसे रिस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत. खरं म्हणजे असायला हवं की तुमचा प्रोजेक्ट कम्प्लिशन रिपोर्ट जो आहे तो युजीसीनी, उदाहरणार्थ युजीसीचा जर प्रोजेक्ट असेल तर त्यांचंच एक वेबसाईटला एक पोर्टल असायला हवं की जे प्रोजेक्ट आजपर्यंत झालेत त्या सर्व प्रोजेक्टचे प्रोजेक्ट कम्प्लिशन रिपोर्ट हे ओपन असायला हवेत. जसं आता आपण SSR फॉर एक्झाम्पल, नॅकचा आपण कॉलेजचा SSR मॅन्डेटरी आहे, NIRFचा डेटा आपल्या वेबसाईटला ठेवणं मॅन्डेटरी आहे. तसंच विद्यापीठांनी नाही, त्या फंडिंग एजन्सीनी मॅन्डेटरी करावं की किमान तुम्ही तुमच्या पोर्टलला जेवढे प्रोजेक्ट कम्प्लिटेड आहेत ते तुमच्या प्रोजेक्टला असणं कंपल्सरी आहे. असं जर गाईडलाईन्स युजीसी आणि रेस्पेक्टिव्ह फंडिंग एजन्सीजनी विद्यापीठांना जर दिलेत तर ते सर्व प्रोजेक्ट ऑनलाईन विद्यापीठाच्या वेबसाईटला राहू शकतात. पण तशा काही गाईडलाईन्स सध्या नसल्यामुळे तसं नाहीये कुठल्याच विद्यापीठाच्या वेबसाईटला. सर, इन सर्व्हिस पीडीएफ करण्यासाठी काही वेगळे नियम आहेत का? नाही सर, नाही. इन सर्व्हिस पीडीएफ सुद्धा कसं असतं माहितीये का की तुम्हाला फॉरेनला जायचंय समजा, ओके, पीडीएफ करायला तुम्ही जॉब करताय. आता कसं असतं माहितीये का, तुम्हाला ज्या लिव्ह मिळतात त्याची पूर्ण प्रिव्हिलेजेस तुमच्या एम्प्लॉयरला असतात. अच्छा, तुमच्या एम्प्लॉयरला जर वाटलं तुम्हाला सोडावं, कारण नियम जरी असेल, स्टडी लिव्ह हे लाईफ टाईम मध्ये 3 वर्ष तुम्हाला घेता येऊ शकते. स्टडी लिव्ह कॅन बी फॉर द पर्पज ऑफ डुईंग पीएचडी ऑर कॅन बी पर्पज ऑफ डुईंग पोस्टडॉक. कारण स्टडी लिव्ह म्हणजे काय, पोस्टडॉकला तुम्ही काय करणार, जाऊन तुम्ही काहीतरी नवीन टेक्निक शिकणार आणि परत येऊन तुमच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, राईट. तर तुम्हाला युजीसीच्या नियमानुसार आणि 7वा आयोग जो आहे त्यानुसार तुम्हाला तुमच्या लाईफ टाईम मध्ये 3 वर्षाची स्टडी लिव्ह तुम्हाला मिळू शकते. ओके सर. परंतु तुमचा जो एम्प्लॉयर आहे त्या एम्प्लॉयरचा प्रिव्हिलेज आहे तो प्रिव्हिलेज आपला नाही आहे. एम्प्लॉयरने जर म्हटलं मला नाही पाठवायचं तर तुम्हाला काही करता येत नाही. त्यामुळे कॉलेजेसमध्ये फार कमी लोकांना संधी मिळते, कारण तिथे वेगवेगळे इश्यूज असतात, बायसेस असतात, राजकारण चालतं. रिलेटिव्हली विद्यापीठामध्ये कमी राहतं. विद्यापीठातही राजकारण चालतं पण रिलेटिव्हली कमी राहतं. ओके सर, ओके. Any other question? Okay. Now it's time to vote of thanks, sir. Okay. Good evening, one and all. Good evening, one and all.
It has been such an honor to be a part of this wonderful, knowledgeable session. I immensely thankful to Dr. Professor Shirsat sir. Sir discuss on topic of drafting of research proposal and funding opportunities. Sir has been discussed about drafting the research proposal and exploring funding opportunities are crucial steps in the research process. A well-structured and compelling research proposal serves as a roadmap for study and helps secure funding. Be clear, concise, and demonstrate the significance and feasibility of research. Explore various funding sources, including government grants, private foundations, and internal funding program at academic institutions. Sir, you really superb and motivated us to gain knowledge. Thank you, sir. Thank you very much, madam. Thank you. Okay, madam. See you Thank then. you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.
अमोल सर. मीटिंग एंड झालेली आहे का? हो सर, मीटिंग एंड झालेली. ओके, मग लिव्ह का नाही करत सर अजून? ते